me add. Okay, we are at 3:30, so I think we can start. Uh, I know people will join in between, so we'll add as they come. So let me share my screen. Let me know once you can all see my screen. I don't have any presentation or something. It's just impromptu, but I do have an agenda that I shared in group yesterday. Can you see my screen? This Excel file you can see? Yes, yes, Okay. we can see. Yeah. So we'll keep it very simple and straightforward and short. We'll go through discussing some of the aspects of value investing, narrative investing versus momentum investing. So today there is no discussion on FNO, options, strategy, etc. Like previously we did discuss on Death Pro and a lot of techniques to trade options. So it's just cash and buy and hold or sell. Uh, Let me add some noise there. So we'll start with this, okay, and then we'll discuss how to quickly check fundamentals, volumes, trend of a stock, and using trend we'll use some moving average. So the period of those moving average would be based upon Fibonacci numbers. Uh, what's the purpose and reason of using certain things? I'll discuss. That's my style. Okay, maybe not the best, or maybe not the one that everyone should follow, but I'll just share what I do. Then we'll talk about alpha chaser, indicator, and the Google sheet. And in the Google sheet there are stocks across sectors and large, mid, and small cap. Then we'll talk about take examples and check some of the stocks which actually created some wealth over the last year or so, and then many stocks where people are stuck or they have destroyed their wealth, or people have just wasted their time in that. One second. Then we'll discuss about portfolio rebalancing. Okay, and using and we'll understand Pareto's principle. Maybe you all are familiar with Pareto's principle, but it's just a very small principle, and how that impacts, knowing understanding of that makes some decision making easier and better for us. Then we'll take some question answers, and I think if we want to discuss any other indicator, or like JRG wanted to discuss Ganga, so we'll can spend some time on that, and that will be, I think, try to wrap that in 90 minutes or plus minus a few minutes. So before I start, I mean, just a small disclaimer. This is a session as per requested by all of you, and there is no intention to uh, sell anything, or create any sort of a message that shouldn't be created. I am not a CV registered research analyst, though I did my certifications in NSE Fundamental Technical Wealth in 2015, and now even those certificates are expired because they give you a validity of 5 years. So all my certifications expired in 2020, the NSE certifications. So that's about me. I am a part-time professional, a part-time trader, and a working professional. Work for a, for those who don't know me, work for a consulting firm, and just whatever time I have, I just spend researching on things, or building, coding things, testing things, back testing things. So that's my hobby. So whatever I'm going to tell you is just my way, may not be the best way. It's just my way of doing things. Right or wrong, you can take a judgment call. Okay. So any question before we start? Okay. On the agenda, or anything that you are expecting isn't covered yet here?
This is all thoughts in my mind. I just listed down last night here. Anyone wants to say anything? No. Okay. So many I don't know about the number of experience of people in market. So I'm assuming some of the people are very beginners as well. They are not. They might not be in the meeting today, but maybe if they, we are also trying to record the session. So if they watch the session, so for them, we'll try to understand. I mean, everybody is kind of an investor, right? Either you are investing in mutual funds or via SIP or via some or the other method. You know, people have some certain section of stocks of their favorite stock. They do SIP every weekly, every monthly. They put money into them. So everybody have their own style of investing, and it is something that they have thought about it. Uh, there is some background noise I'm getting. Can someone mute, please? Uh, or please all go and mute. पीयूष जी आप भी म्यूट पे कर दीजिए. So, so I was saying that everybody have their own way of investing, and investing is something that people tend to learn over the years. I mean, the better style of investing, but typically everyone starts with SIP method of, because that's the easiest method and that's most everywhere it's talked about very highly. It's been talked about. Even in the group, I even sharing large caps and mid cap, small cap SIP method and how it creates huge wealth over the years with compounding effect. So this is something that investing is something that you tend to learn by doing it yourself and figuring out things that what has worked and what has not worked, or you either go and read books or you talk to some experts or hear them out. They have their own opinion, but broadly, if we have to classify investing, I'll classify them in couple of different categories. Okay, and the one that we're going to deep dive today is the momentum one. So, what is value investing? Value investing is something that all of us, all of our brain is by default tuned to do it. What is value? Say if you like a company, let's pick an example, Reliance. Okay, many people might be holding Reliance, so don't judge me for using some language for Reliance. But what I'm trying to say is that is a fundamentally solid company. Okay, and it might be at a certain point very much beaten down. The stock price would be beaten down, and you may see a certain value in that because the mind says buy low and sell high, right? So it goes by the method buy low always and sell high. Am I audible still? Can you all hear me? Just wanted to check. Yes, yes. Yeah, yeah. Okay. Well, Okay, just say I was only speaking, so it felt like just me in the room. Okay, so this is like buy low and sell high. Everyone wants to find the best stock at the lowest price and then sell when they are getting good returns, right? That is how the human brain has been tuned when we are introduced to the stock market, this particular field. And but there is a disadvantage in that, in this method. There are disadvantages in all of the methods, advantages and disadvantages. Disadvantage is that sometimes you just don't know when it is the low. Correct, you never know the low. Never know the low. So what people do is what's there, you never know the low, and then people keep on averaging. They keep on averaging. वो बोलते हैं कि अच्छा स्टॉक है, एवरेजिंग कर लेते हैं, the price will come, but they still keep on waiting for the price to come. Okay, I'm hearing my own voice. Can someone please go on mute? Uh,
संदीप जी म्यूट कर दीजिए. Okay, so everyone they keep on averaging and then they keep on waiting. What happens sometimes, the disastrous things that can happen in value investing is the stock just goes on to keeps on falling, and it becomes an idea, it becomes a yes bank, and people are stuck for life, and they don't know. They try and average and try to just get down, and in market we say that never average a losing stock, but people do, right? Even everyone knows that you should not be adding on to your losers, but still people add money to the losing stock just to average and to come out. In this whole process they are losing opportunity cost. जो उनका पैसा स्टक है, right? They're losing the opportunity cost, because if you're not FD, maybe if you're getting 8%, 8.5%, and here you're not making any money, rather it is going in negative. So you are losing that time value of money over the months and years. Plus you are putting more money if a stock is going down. Okay, it can be any stock, I'm not talking about Reliance, but Reliance का example also we'll see in the last year, and so it has done nothing. वो वहीं पे बैठा हुआ है. And okay, people have it if they're doing some other strategies. That's understandable. Meaning when I say other strategies, like वो covered call कर रहे हैं, put कर रहे हैं, वो that is a different game. But we are today, like, we are purely talking of investing. So the last 1 year, we neither Nifty has gone anywhere. We're just about there, near to the all-time high, and the king of the Nifty is Reliance. That is also has done nothing. So people have been losing opportunity cost of money, and this money could have been parked in a better stock, right? In terms of a technique called as momentum investing, where you try to invest in some stocks which you think that they are in momentum and the momentum will continue. Okay, few days back I shared one Newton's first law, that something, an object in not in motion will continue to remain not in motion. जैसे कि this Reliance, it's sitting at one place, वो वहीं पे ही बैठा रहेगा until unless something very concrete happens to it. And a particular stock which is in motion or in momentum, it will continue to remain in momentum until unless anything very significant happen to it. Correct. So this is the disadvantage of value investing, but there are very good people who are able to pick very good fundamental stocks at very good value. How they identify value? There are various techniques, Gordon method, and other techniques, such as they find that the uh, price, true price. There is something called technique in finance. We call as intrinsic value. So one second, to uh, Hitesh ji, can you mute? Yeah. So there is a technique for them. They call it as finding intrinsic value. So intrinsic value is like, given the CAGR growth of the company and the free cash flows, and using a discounting method. Today, for example, for Reliance, 2200 is the intrinsic value. Anything above 2200, I'm just taking a hypothetical example. Anything above 2200 is overvalue or additional value kind of a thing. So if the stock falls below 2200, can you please mute someone? There's some background noise coming. uh, I'll admit everyone. हितेश जी म्यूट कर दीजिए. There's some background noise coming.
हितेश सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, there's some noise coming. Uh, sure, let me try. Okay. So let's say there is 2200 is in intrinsic value. So if the stock falls below the intrinsic value, they see that okay, now fundamental are good and the stock is way below the intrinsic value. Let's say 2100, they go and start investing in this method. That eventually it is a solid company, it will come back. But in this whole process of doing this process, you don't know that you will be able to beat the Nifty return or not. So Nifty return, let's say CAGR 13%, 12%, whatever, you still don't know about in this method because the stock may come back to its intrinsic value and start going up, trade above the intrinsic value, but you have already invested in a beaten down stock at a beaten down price. Now there will, when the stock comes up, ऊपर से नीचे आता है, तो बहुत सारे सप्लाई जोन्स होते हैं, रेजिस्टेंस एरिया होते हैं जहाँ पे उसको स्ट्रगल करना है और वहां से निकल के ही जाना है. वेयर एज व्हेन यू बाय अ मोमेंटम स्टॉक, ओके, वो ऑलरेडी बहुत हाइस पे ट्रेड कर रहा होता है. इट विल मेक यू फील लाइक यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव स्टॉक, इतना ऊपर खरीद रहा हूँ गिर जाएगा, बट एक्चुअली में उसके ऊपर में देर इज नो रूफ टू इट. Okay, so let me give an analogy. For example, ये there is a kid, ये ठीक है, ये kid है, he is flying a kite. He is flying a kite, but ये वाला जो kid है, he is flying a kite from in a park, ground में से, ये ground से उड़ा रहा है, ground से, and ये वाला है ये छत से उड़ा रहा है. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्टर है. वैल्यू इन्वेस्टर का काम है कि नीचे पे स्टॉक बाय लो एंड सेल हाई, एंड ये वाला है ये छत से उड़ा रहा है. ठीक है, क्योंकि उसका स्टॉक हवा में है. तो व्हाट डू यू थिंक, आई मीन जस्ट कंपेयरिंग दीज टू एग्जांपल कि whose kite would be easier, like किसका पतंग आसानी से उड़ जाएगा. Anyone who wants to say anything, come on, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए. किसका किसका पतंग आराम से उड़ जाएगा. प्रूफ वाला. रूफ वाला उड़ Definitely the जाएगा. roof one. रूफ वाला उड़ेगा उनके. या हाँ, क्योंकि कोई हर्डल नहीं है उसके पास, राइट. या जो राइट. जो 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 नीचे से पतंग उड़ा रहा है उसका वो पेड़ में फंसेगा, इलेक्ट्रिसिटी वायर में फंसेगा, वहां पे हवा नहीं है. तो बहुत सारे इश्यूज हैं उसको यहाँ से उड़ाने में, बट इसका इसको इसको इतना ज्यादा हर्डल्स नहीं मिलेगा, तो इसका उड़ेगा. तो ये एक एनालॉजी है, राइट. And then we'll use this analogy to understand what is momentum investing. So as of now, what is value investing we have spoken about. Okay, so this is one way of method. People have made money and can make money. I'm not saying this is a bad method. We are just comparing and talking of certain methods, so that when we come and talk about alpha chaser and what is momentum investing, you know the psychology and reason why we are doing certain thing. Okay. Then there is something called as narrative investing. You would not have heard about this, but eventually ये घूम फिर के आता है. सो नैरेटिव इन्वेस्टिंग क्या होता है कि जैसे फ्यू इयर्स बैक बिटकॉइन वाज, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, राइट. सो अब क्रिप्टो क्या है, उसमें कोई फंडामेंटल नहीं है. यू डोंट नो कि मतलब कुछ भी नहीं है उसमें. हाउ यू कैन, देयर इज पीपल कैन ओनली डू सम टेक्निकल एनालिसिस, या थोड़ा वो टेक्नोलॉजी की जिनको नॉलेज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, वो थोड़ा वो तो उसको एनालाइज करके कैन ओनली फाइंड आउट. बट लाइक companies who have real balance sheets and real profit and losses, real businesses, equipments, human resource, वो सब कुछ उसमें नहीं है. So but people were investing in that narrative that was uh, built in our trading community, left and right. So 60,000 तक ले गए उसको. Money flow was also very high during that period. अभी तो quantitative tightening हो गया तो money flow भी बाहर आ गया पूरा. So I'm just saying example is like Bitcoin. मैं आपको और भी example बता देता हूँ. And Bitcoin के बाद there is another. So you can also say theme, or theme may be a wrong word, but narrative is something that has been built, but actually there is nothing.
ओके, टीवी चैनल्स पे बहुत सारा नैरेटिव बिल्ड होता है. वी वी टेंड टू मिस इट बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट ट्यून टू फाइंड दैट नैरेटिव. वो बैठ के आराम से सोचते नहीं है. वी आर ड्रिवन बाय द इमोशंस दैट द टीवी रिसर्च एनालिस्ट, जी बिजनेस में इतने सारे आते हैं, हर एक पे ही आते हैं आजकल, तो वो भर भर के बताते हैं किसी इसमें से ये इन्वेस्ट करिए, ये कंपनी ये करता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज बिल्ड अ सर्टेन नैरेटिव. कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है, ओके, द बेस्ट एग्जांपल केस इज एलआईसी. एलआईसी का आईपीओ जब भी आया तो उसके बारे में भी, इफ यू आई डोंट नो, देयर वाज अ ह्यूज नैरेटिव. मोनोपोली है, लार्जेस्ट बिजनेस है, बैलेंस शीट अच्छा है, डीआईआई है, डिस्काउंट भी दे रहा है, वुमेन वुमेन से अगर आप वुमेन अकाउंट से अप्लाई करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो सबको एलआईसी में पैसा लगाना चाहिए. इट इज नथिंग, इट इज नैरेटिव बीइंग बिल्ड. एंड जब तक वो नैरेटिव हमारे पास आता है, यूजुअली लाइक जब तक बिटकॉइन के बारे में आपको पता चलता है या कोई ऐसे स्टॉक के बारे में पता चलता है, तब तक वो ऑलरेडी उसमें जो अल्फा होता है वो प्ले आउट हो चुका होता है. Correct. So always realize, is there a, just try to think about it. Is there a narrative being built यहाँ पे? कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा क्या? इसमें ऑलरेडी जो मूव होना तो हो गया है. अब लास्ट का 10% का ही शायद मूव होगा, जैसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं, वो क्लाइमैक्स के में मैं जाऊंगा और मैं फंस जाऊंगा. अनदर नैरेटिव अभी भी चल रहा है थोड़ा स्मॉल लेवल पे. इट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो पीपल वर इन यूएस, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मेरे ऑफिस में भी हैं यूएस पे, हेविली इन्वेस्टेड इन टेस्ला. टेस्ला टेस्ला का चार्ट खोल लेते हैं. ओके, थोड़ा सा चार्ट के साथ में बात करेंगे तो इंटरेक्टिव रहेगा. Someone is there. So Tesla, this is Tesla. Okay, now what you see this Tesla, ये ये अल्फा चेजर इंडिकेटर, इसमें मैं भी बाद में बात करेंगे, बट एवरीथिंग यू सी ओवर हियर इज इन रेड. ओके, ये देखो, ये टेस्ला कहाँ से आ रहा है नीचे, कहाँ ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है नीचे, और ये क्लाइमेक्स होता है. ये जो ऐसा पैराबोलिक मूव आ जाता है, इसको इसको मैं क्लाइमेक्स बोल रहा था अभी. एंड देन यहाँ पे जब तक यहाँ तक स्टॉक पहुंच जाता है, वो नैरेटिव इतना स्ट्रांग होता है, तब तक हम रिटेल लोग के पास आता है. एंड वी गेट स्टक इन दिस होल प्रोसेस. Correct, we get stuck in this. Some people, I'm not saying everybody will get stuck, but most of the people, they know, or they hearsay में entry करते हैं, but exit mechanism नहीं होता है. So people tend to get stuck in some stock, and then they say कि fundamentally Tesla अच्छा stock है, आ जाएगा, ऊपर पड़ा रहेगा, क्या जा रहा है. But what they are not realizing is they are losing an opportunity cost of their money. ये 2021 अक्टूबर पे, नवंबर पे हाई लगा के अभी भी there's nothing. ये एकदम पूरा ये देख लो, रेड रेड, मतलब ये पूरा ब्लड बाथ है आपके पैसे का यहाँ पे. तो दिस इज अनदर नैरेटिव बीइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल. अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है नैरेटिव, जब से चैट जीपीटी आया है, लेट्स से, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैरेटिव पे पूरा का पूरा नैस्डैक चल रहा है अभी. ओके, सो इफ यू सी, और उसी नैस्डैक की वजह से हमारा आईटी भी उठा है. लेट्स से नैस्डैक देखते हैं. पहले आईटी के, सॉरी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने एनवीडिया देखा था उस दिन, एनवीडिया कॉर्पोरेशन. सो ये देखिए, ये अल्फा चेजर में भी अच्छा कर रहा है, बट ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट. कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा था, कोई यहाँ पे बात नहीं कर रहा था, मार्च में कोई बात नहीं कर रहा था इतना. अभी सब जगह न्यूज में है, ट्विटर पे है, लोग स्टोरीज बना रहे हैं, रील्स बनाएंगे इस पे ऊपर, पूरा नैरेटिव बनेगा. आप तक जब तक पहुंचेगा, मेरे तक जब तक पहुंचेगा, इसमें गेम हो चुका होगा. अभी यहाँ एकदम स्टक. मैंने, आई एम नॉट सेइंग दैट इट कैन नॉट गो अप, but maybe its price to sales is significantly unfavorable at this particular moment. Okay, another इसका छोटा भाई है AMD. ठीक है, AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ये भी देखिए, ये भी वैसा है. इस पूरे नैरेटिव में ये जो नैस्डैक जो बीटन डाउन था, नैस्डैक 100 यूएस मार्केट,
ये नैस्डैक 100 में यहाँ से मोमेंटम बिल्ड होके ये नैस्डैक भी ऊपर चला गया है। अभी नैस्डैक में क्या है, सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज है। गूगल, एक मिनट, मैं यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में है सब। गूगल, फैंग बोलते हैं यहाँ पे, फेसबुक, एप्पल। ये देखिए फेसबुक, गूगल ऊपर है, ये आपका एप्पल भी सही है। ये सब क्योंकि नैस्डैक का पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, तो ऑफ कोर्स दे आर डूइंग वेल, राइट। नाउ इतना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है इन द यूएस आईटी स्टॉक्स, बट इतना अच्छा मूवमेंट हमारे आईटी में तो नहीं आ रहा है, राइट। हमारा अगर अभी भी आप इन्फी देख लेंगे या कोई और स्टॉक देख लेंगे, तो वो यहाँ पे है अभी भी, वो पूरा इस वेल डिस्ट्रक्शन हो रखा है यहाँ पे अभी भी। करेक्ट, यू गाइस एग्री? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी जो नैरेटिव चल रहा है वो दैट इज एआई का। ऐसे ही एवरी नाउ एंड देन देयर विल बी certain one or the other narrative that will come. It's our job to figure it out, what, where, I mean, how much valuable it is right now, uh, and not. So इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वी it's difficult to figure out for a layman, difficult to figure out, and until they read about things a lot, difficult to figure out. Then high tendency of getting stuck. Tendency of getting stuck. There is no method to madness. ठीक है? Till here with me, वैल्यू एंड नैरेटिव तक मेरे साथ है। ये इस ये 5 मिनट लिखा, बट मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक। हेलो, एनीबडी इज सेइंग समथिंग? Yeah. Yes, Yeah, we are with yeah. you. With you, MK. Okay. Can So hear you. okay, good. Then what we're trying to do is now we're moving on to the second section here, which is momentum investing. So momentum investing में you will already see a lot of small cases, जो आपके ये small cases वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे वेरियस रिसर्च एडवाइजरीज के स्मॉल केसेस आपको मिलेंगे। And what all of them are doing is they have a method कि ये स्टॉक मोमेंटम में है, उसमें हम वी विल अप्लाई, sorry, we will invest, and then we will continue to hold that stock until unless the momentum is broken down. And once the momentum is broken down, we will find another stock which is right now coming in our filters or is in coming in momentum. But इस पूरे के पूरे method में there is one disadvantage. What disadvantage is, this method works well in bull market, बहुत अच्छा अल्फा जनरेट करता है बुल मार्केट में, जनरेट्स अल्फा। And if you are not taking good care of it in bear market, then you'll tend to lose all the alpha that you have generated, और जितना हार्ड वर्क आप करके वो अल्फा बनाएंगे। पहली बात तो अल्फा क्या है, अल्फा जैसे ये है, ओके, मैं अल्फा को समझाने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से निफ्टी, ये निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ठीक है, 1 दिसंबर 2022। किसी भी स्टॉक का आपको 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखना है, तो एक ना मेरा इंडिकेटर है एम स्कोर करके, बहुत पुराना, ये वाला इंडिकेटर आप यहाँ जाइए, इसको ऐसे अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, ATH और ATL। तो ATH क्या डेट को लगा वो भी आपको मिल जाएगा, कितने दिन पहले मिला है, और अभी हम कितना परसेंटेज वी आर अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, वो सब मिलेगा। सो आवर इन द अल्फा चेसर मेथड वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट these two डेट्स, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। ये जो दोनों डेट हैं, ये दोनों डेट हम इनपुट में डाल देते हैं वहाँ पे। तो मैं नीचे दिखाता हूँ, ये जो इसका ये यहाँ पे है, ये ईयर मंथ डेट डाला, ये लो का डाला, ईयर मंथ डेट ऐसे डाला, ये यहाँ से आप इससे निकाल सकते हैं एम स्कोर इंडिकेटर से।
All right. So what I'm trying to say is what is alpha. So अभी अभी के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे इट वाज फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2022 पे ऑल टाइम हाई लगा, करेक्ट. अभी फर्स्ट ऑफ दिसंबर 22, देयर इज समवन ऑन, अतुल जी एक बार म्यूट कर दीजिए. सो फर्स्ट ऑफ दिसंबर के बाद में लेट्स से बैंक निफ्टी देखते हैं अगर. तो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया. तो आप यहाँ पे देखो वो थोड़ा सा ब्लू में है. तो क्योंकि निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, बट बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी गया, अभी थोड़ा नीचे आ गया, बट it did generate some alpha. So basically what is or another sector is like for example FMCG, CNX FMCG. ये एफएमसीजी सेक्टर है. ये देखिए ये एकदम ब्लू लाइन इसका एकदम ऊपर जा रहा है. सो इट हैज एफएमसीजी सेक्टर हैज एज कंपेयर टू निफ्टी हैज क्रिएटेड गुड अल्फा फॉर अस. ओके, दिस इज लाइक सेक्टर्स में हाउ टू रीड अल्फा चेंज इज स्लाइटली डिफरेंट देन हाउ टू रीड इन स्टॉक्स. व्हेन वी विल कम टू the section of discussing this indicator, this section I'll talk about both sectors में कैसे देखना है and stocks में कैसे देखना है, दोनों का बात करेंगे. But what I'm trying to say is what is alpha is higher return than benchmark over a over a long period. तो लेट्स से निफ्टी अगर फ्लैट है, लेट्स से निफ्टी अगर 0% भी है, मान लेते हैं ऑल टाइम हाई पे है, अभी ऐसे थोड़ा नीचे है, बट मान लेते हैं जो एफ एम सी जी है वो वो 10% ऊपर है. जिस दिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई बना था उससे कंपेयर करें अगर हम एफ एम सी जी को, तो एफ एम सी जी वहाँ से 10% ऊपर है. तो 10% इज द अल्फा. ओके, सो वेरी लेमैन, बिकॉज आई नो बहुत सारे एक्सपीरियंस लेवल के लोग सुन रहे होंगे अभी और या रिकॉर्डिंग को सुनेंगे. तो जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो एकदम बिगनर है, मुझे पता है. तो उनके लिए बस ये है कि अल्फा है कि अगर निफ्टी ने 0% रिटर्न दिया और किसी एक सेक्टर ने 10% रिटर्न दिया है, तो वी आर दिस पर्टिकुलर सेक्टर हैज आउट परफॉर्म निफ्टी. तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ये अल्फा है इसका. इसको एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में वो लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, बट व्हाट अल्फा चेजर इंडिकेटर में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है. हम लोग सिर्फ प्योर परसेंटेज और डेट्स पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. So we talk about this as alpha. So as I said, like this works very well in bull market, but struggles in bear market. So what we need a method इसमें कि अगर bear market हो रहा है तो जो stock बहुत ही ज़्यादा highly valued है, they will also correct, right? जब टूटेंगे तो सारे stock टूटेंगे, सब एक साथ में गिरते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन जिसका हाई है उसमें जोर की प्रॉफिट बुकिंग भी आता है. तो वो एकदम से सडन रिएक्शन भी देता है. it can happen any day. We don't know when it will happen, but we need to be prepared. How can we prepare ourselves in this method is to know an exit mechanism. So understanding exit is the key. Let me add someone is there. So understanding the exit is the key in this one. And then another disadvantage in this method for a retailer is there are so many stocks. Now how do we know which stocks have the tendency or has created alpha? How to figure that out in the very big universe of the stock that we have across categories: large cap, mid cap, and small cap. So uh, finding stocks to invest. Okay. So in this we will have some. We'll take some help from a Google sheet. Okay. And we'll try to find out. So यहाँ तक clear है कि what are the three different types of ways where everyone is either is using value investing or puts his money during a narrative
being built, or he is using a momentum method. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो? Yeah, got it. Okay. So now let's move. So we kind of have covered these two part, the first two part. Now we'll talk about how to quickly check fundamentals, volumes, etc., and the trend of the stock. Now, how do we do that? So when we are saying we are going to do momentum investing, सो अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे कोई प्रोडक्ट्स लेट्स से द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बेच रहा है एंड उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड एक और कंपनी है वो चाय समोसा बेच रहा है, उसका भी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वी आर अ प्राइस ट्रेडर, राइट? वी डोंट केयर अबाउट वो कंपनी क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? तो इसमें वील आई मीन द बेसिक आई अगेन से कि आपको कुछ मेथड्स आते होंगे, तो डोंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिविएट you from a certain style of investing. What I'm trying to say here is कि we are price traders. We are not trading a story. We are not trying to see कि उसका फंडामेंटल भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे सिस्टम में जाके देखते हैं. तो सिस्टम में कैसे देखना है, ये एक बारी के लिए हम लोग ना कोई स्टॉक ले लेते हैं. लेट्स से कौन सा स्टॉक ले ले, एशियन पेट ले लेते हैं, एक्साइड एक्साइड ले लेते हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज. ओके. ये तो एक ना इफ ये यहाँ पे ये इंडिकेटर पब्लिश है पब्लिक लाइब्रेरी में, वॉल्यूम, प्राइस एंड फंडामेंटल्स, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी में है. आप इसको जाके इसको अप्लाई कर दीजिए, इसका जाके आप कोड वोड भी दे सकते हो, इट्स ओपन सोर्स सारा कुछ, ठीक है. सो व्हाट वी गोइंग टू यूज इज दिस पर्टिकुलर थिंग. लेट मी जस्ट से विजुअल ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट. So यहाँ पे there are two boxes here. Okay, the box on the left is giving you all the fundamental information. So अगर एक्साइड बैटरी बेच रहा है या वो बैटरी खराब कर रहा है, मुझे नहीं पता है वो क्या कर रहा है, बट एज लॉन्ग एज उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, आई एम इंटरेस्टेड. एज लॉन्ग एज वो हमारे फिल्टर क्राइटेरिया में आ रहा है, चाहे वो कुछ भी बिजनेस कर रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. Okay, so that's what I'm trying to say. People love stocks because of a certain kind of a business they are doing, or they just love us their stock, and they want, even if it is not making money for them, they have habit कि अरे ये तो मेरे पापा के टाइम से इन्वेस्टेड है, ये तो लॉन्ग रन में हो जाएगा, बहुत सारा एक्स हो भी जाएगा. देर आर, यू ऑफन सी व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज कि अगर आपने 1990 में ये लिया होता तो वो इतने का हो जाता. दैट दोज आर गुड फॉरवर्डेड मैसेजेस, बट अल्टीमेटली वी ऑल नो कि 1990 से लेकर के 2023 तक किसी ने होल्ड नहीं किया होगा, और राइट, देर आर एक्सेप्शनल रेयर केसेस, बट ट्रूथ इज, reality is different, practicality is different. So what we are trying to say is here कि अगर वो कुछ भी बिजनेस कर रहा है, मुझे नहीं पता है उसका नाम एक्साइड है या कुछ और नाम है, मुझे उससे भी मतलब नहीं है. उसका क्या बिजनेस ओनर है, क्या वो कर रहे हैं, मुझे उससे भी मतलब नहीं है. मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उसका ट्रेंड कैसा है, उसमें जो है अल्फा जनरेट वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा है तो मुझे एग्जिट मैकेनिज्म पता होना चाहिए. So what this indicator is telling you here is, still if you want to see quickly fundamentals, हालांकि ज़रूरत नहीं है, but let's say कल हमने बहुत सारे चार्ट शेयर किए, फॉर एग्जांपल ऑल आर लाइक स्मॉल कैप कंपनीज, नाम भी नहीं सुने होंगे, राइट? फिर भी सोच रहे होंगे कि क्यों डाल रहा है यार ये, मतलब इसमें कोई पैसे क्यों लगाएगा, when there are safer stocks to invest, why put money in unknown names, correct? But those unknown names are making huge money for people, and that's why their stock prices are going up. But if you, अभी कल किसी ने पूछा मेरे से कि are these fundamentally good companies, I said I don't know. If you want to check, we will check in the meeting. Like say for example एक्साइड है, अभी एक्साइड का मुझे देखना है कि कंपनी डिविडेंड कितना देता है, तो यहाँ पे जाके ऐसा जाके यहाँ पे ये फिस्कल ईयर है, ये फिस्कल क्वार्टर कर लेना है.
अभी आप फिजिकल ईयर में देखेंगे तो ये डीवीपीएस है, डिविडेंड पर शेयर। तो आपको पता आ रहा है कि वो इतना 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 डिविडेंड दे रहा है। अगर आपको उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है, पीई रेशियो, आप यहाँ करिए, ये पीई रेशियो आ जाएगा उसका। ठीक है, आपको क्वार्टरली देखना है, वो क्वार्टरली हो जाएगा, लाइक एनी अदर गुड वेबसाइट, राइट। यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको सारी जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है इस कंपनी का, वो आपको बता रहा है। जो भी ट्रेडिंग व्यू में डेटा अवेलेबल है वही पुल होगा इसमें, जो ट्रेडिंग व्यू में डेटा नहीं है वो इसमें नहीं होगा। इसका टोटल डेट कैसा है इस कंपनी का, ये यहाँ पे आपको ये बता रहा है। जैसे कि ये ईयर ऑन ईयर देख लेंगे जो भी डेटा आ रहा है इसमें, इसका ये टोटल डेट है। ओके, द डेट हैज बीन इंक्रीजिंग देयर 20 2019 से 2023 तक देख सकते हो कैसे कैसे डेट इंक्रीज हो रहा है, ईयर ईयर ग्रोथ। एंड देन यू कैन ऑल्सो सी व्हाट आई पर्टिकुलर आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इज अर्निंग पर शेयर, ईपीएस में ग्रोथ है कि नहीं। अभी इसका जो 2023 का ईपीएस है वो डाउन हुआ है। उसके लिए अगर आपको डीप स्टडी करना है तो फिर उसका एनुअल रिपोर्ट खोल के देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज लीडिंग फॉर अ फॉल इन ईपीएस। ठीक है, तो दिस इज क्विक टेबल, हैंडी टेबल, जहाँ पे आपको सारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो काम की है मोटा मोटा, वो आपको सारा कुछ यही मिल जाएगा कि एबिटा कितना है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, वो आपको यहाँ ये एबिटा वगैरह मिल जाएगा, राइट। रिटर्न ऑन Mohit, या excuse me. या Or we can just do a quick check on the screener.in, right? yeah, you can do You can get, or we can get 10 years data across every parameter, like in dividends, EPS, EBITDA. correct. You can go there in screener.in, type the stock, उसका पूरा fundamental information you'll get. Oh, और yes, if right. if you are using trading view, यहाँ पे in this section you can whatever stock you are just keep on changing your watch list, यहाँ पे quick snapshot आता रहेगा आपका। But what we are saying here is we want to quickly check fundamentals, because इतना ज़्यादा हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है फंडामेंटल्स पे इन्वेस्ट करने पे, क्योंकि इवेंचुअली द व्हेन देयर इज मोमेंटम लॉस वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस, we may remain invested for maybe for 2 weeks, maybe for 2 months, maybe for 2 years, we don't know. So as long as there is price appreciation, we are in the counter. And there's someone, and as long as there is no price appreciation, we are out. Okay, so this is about the fundamental part here. Then what you see here is there are certain moving averages. मैं थोड़ा zoom in कर देता हूँ। So यहाँ पे you can change 821 55 144. Okay, so that is what you see here. So this is telling how much percentage your price at the moment is far off from this moving average. So for a particular stock, if it is in uptrend, what we need is, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, okay, let me bring this thing here। यहाँ पे what we need is a pattern of higher highs and higher lows, and the moving averages slope should be sloping upwards. Okay, so what you see here is this is a, let's say, recent low, यहाँ पे this level, उसके बाद में this is the high, this is the low। ठीक है, then it is making a new high। Okay, so we need an uptrending pattern, higher, there should be higher highs and higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, that sort of a pattern we want। Okay, and if you see these moving averages, there are too many right now, let me 144 में हटा देता हूँ। Okay, so you see ये सबका जो slope है kind of 45 degree pointing upward है। Okay, and every moving average is serving its own purpose। जो 8 वाला moving average है, that is the fastest, as you know। So it tries to uh, overlap the price। अगर अप ट्रेंडिंग में है तो ऐसा लो को चिपक के चलेगा। ठीक है, यहाँ से लो को चिपक के चलेगा, और जब
there is a momentum loss. यहाँ पे ये it'll say a cross. So 8 has been crossing 21 moving average. So ये छोटा red cross आ गया, ठीक है. And then when 8 crosses 55, 8 सीधा 55 को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा बिग वाला रेड आ जाएगा. तो ऐसे ऐसे क्रॉसेस आते हैं. और जब भी कोई स्टॉक में ये क्रॉसेस पास पास आते हैं, राइट, तो एकदम से फॉल आता है और एकदम से राइज भी आता है, करेक्ट. अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आपको मिलेगा. बट व्हेन वी आर फाइंडिंग अ स्टॉक, हमारे अगर फिल्टर्स पैरामीटर में आ रहा है, थोड़ा सा चेक करेंगे कि हाँ उसमें रियली देयर इज the stock is trading above the moving averages, and moving averages are giving a sense of direction. So they give a sense of direction, although they are a bit lagging, but they give a directional sense that the stock is in a uptrend. It is making a higher high and a higher low pattern. So this is quickly we'll check across this. And 821 क्रॉस अगर हम हैं उस सिचुएशन में, 820 हम इन्वेस्टेड है, 821 क्रॉस हो जाता है. लेट्स से किस स्टॉक में, बजाज फाइनेंस देख लेते हैं. सो यहाँ पे इफ यू सी, ये यहाँ पे क्रॉस हो गया 8 और 21 का. उसके बाद में देयर इज अ बिग फॉल, राइट. उसके बाद में बाकी के क्रॉसेस भी हो गए, देयर वाज अ बिग फॉल. एंड यहाँ पे ये 2-3 कैंडल में अगर ये क्रॉसेस बनते हैं, उसके बाद से आपका अप ट्रेंड भी स्टार्ट होता है. अभी इसमें देखिए, the slope of moving averages is pointing upwards, so it is up, there is a uptrend being seen. Okay, so as long as it is holding the 8 period moving average, there is a strong uptrend. Okay, and as long as इसके नीचे अगर चला जाएगा 55 के नीचे प्राइस, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं रहना है. अगर 8 के नीचे चला जाता है या 821 का क्रॉस हो जाता है, तो वी विल बी वेरी वेरी कॉशियस. हाँ, वहीं पे ही, ठीक है. ये यहाँ पे मैंने लिखा है हायर हाई लो अपवर्ड स्लोप, 821 क्रॉस पे विल बी वेरी कॉशियस. एंड देन इन द इंडिकेटर इटसेल्फ देयर आर वेरियस अदर क्रॉसेस, 821 एंड 55. ये जब भी पास पास में होते हैं क्रॉस, एक साथ पास पास में, ऐसा पास पास में होते हैं, 2-3 कैंडल में, तो एक जोर का मूव आने की पॉसिबिलिटी होती है. Okay, so this is one observation. Other than that, in this indicator, let me turn on volumes. So what you see is R-vol. R-vol basically is saying ki volume today is 1.13 million. Okay, this is the value of the volume, and 50-day average volume is 1.65. So whatever volume that happened on this stock today is relatively less, like 60% नहीं है. For me, if I'm a breakout, हम लोग शेयर करते हैं चार्ट वगैरह ग्रुप्स में, तो हम देखते हैं बहुत सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है. तो व्हाट यू विल सी दैट वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे जो आरवोल है, रिलेटिव वॉल्यूम एज कंपेयर टू 50 days का एवरेज वॉल्यूम, दिल बी ह्यूज स्पाइक in the volume. Okay, so this is using that. Then there is something called as UD days and UD ratio. So it is saying that this particular stock in the past 15 days, it has made 22 days are green candle, 28 days are red candle. So that's why this box is in red, because although the stock has gone up, okay, यहाँ पे stock ऊपर गया है, but 28 days वो एक रेड कैंडल में गया है, क्योंकि इतना एकदम एकदम फास्ट, मतलब अगर सारे ग्रीन कैंडल होते हैं तो एक समवन बैकग्राउंड नॉइज. नीरज जी, प्रतीक जी, मैक्स जी, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा सबको. feels like someone is snoring. Okay, so there is 50, अगर 50 के 50 ग्रीन कैंडल होते तो यहाँ पे it will be 50 days up. Okay, and this is up down ratio. It is telling कि the days the stock has moved up, उसमें जो वॉल्यूम हुआ है, and the day it is a red candle, उसमें जो वॉल्यूम हुआ है उसका रेशियो is 1.13. So this ratio is good enough. It is above 1.2, 1.3. UD ratio is good, and below 0.8, 0.7, UD ratio is less. So it is just telling कि
ऊपर जाने वाले दिनों में वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, और जिस दिन रेड कैंडल बन रहा है उस दिन इतना इतना खास वॉल्यूम नहीं आ रहा है। सो जो भी हमें ट्रेंड दिख रहा है उसमें वॉल्यूम्स के साथ में वो ट्रेंड दिख रहा है हमको। ठीक है, टिल हेयर विद मी। नीरज जी प्लीज म्यूट। हेलो, till here are you with me? So Yes. okay, how do we quickly Yeah, check yeah. Okay. the fundamentals, volume, stock, trend of the stock? So this is like basic filtering, okay? And then what is Fibonacci averages? So what basically we are using Fibonacci numbers. कोई आप मेरे से पूछेंगे कि 8, 21, 55 ये क्यों लिया है? आप कुछ भी ले सकते हैं। इनपुट में देर इज प्रोविजन टू चेंज ऑल ऑफ दैट, वट एवर यू वांट टू। 8 का 9 करना है या 7 करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। बट वाई आई एम यूजिंग दिस इज, ये जो है ये फिबोनाची नंबर्स है ये वाले। व्हाट इज फिबोनाची नंबर्स जिनको नहीं पता है, तो फिबोनाची नंबर इज लाइक यू ऐड योर प्रीवियस वन टू इटसेल्फ। जैसे 1 से स्टार्ट किया और उसमें 1 ऐड करोगे तो इट विल गिव यू 1 + 1। मैं बता देता हूँ, एंड इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, विल टॉक अबाउट इट। इट इज गिविंग यू 2, ओके, एंड यहाँ पे 2 ले लिया। अभी आई विल ऐड दिस नंबर टू द प्रीवियस वन। मोहित जी, हाँ जी, या संजय दिस साइड, सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जो अल्फा चेजर में आपने दिखाया ना, देयर ग्रीन प्लस विल बी देयर। ये इस वाले वॉल्यूम, प्राइस एंड फंडामेंटल्स में। या so this green, suppose the stock then falls down after few days after this getting this green plus. So how many days after, like, it shows, it will keep on showing that now it is the volume is coming down, or how to judge like how long it's going to last? How to, because we have to act as soon as we see the dark green, bigger green, then maybe we are more sure that it will last. नहीं, इसमें सर व्हाट वी आर जस्ट सीइंग इज कि अभी करंटली उसका ट्रेंड कैसा है। जैसे ये दो ग्रीन अगर बैक टू बैक 2-3 कैंडल में होते हैं, दैट Right. मींस द स्टॉक डाउन ट्रेंड इज सीम्स टू बी एंडिंग। तो Right. यहाँ पे अगर आपको ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह भी ड्रॉ कर देंगे, Right. राइट, ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ लगा लेंगे तो आपको दिखने लगेगा बिहेवियर कि stock is now coming out of its downtrend, and the averages are sloping towards upside. तो ये green is something that is just saying कि ये क्रॉस किया है यहाँ पे, ये क्रॉस की, ये 8 वाला यहाँ इसको क्रॉस किया 21 को, ये 8 वाला यहाँ 55 को क्रॉस किया, और यहाँ पे ये इसको क्रॉस किया, फिर ये 21 वाला 55 को क्रॉस कर गया। ठीक है, ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स है। बट जब तक ये स्टॉक, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज लाइन के ऊपर चला गया इसके यहाँ पे, उसके बाद से ये इसको सस्टेन कर रहा है, करेक्ट, यहाँ तक। True. तो इट इज इन गुड अप ट्रेंड, गुड मोमेंटम। अब जैसे फॉल भी हो रहा है, वो अगर 8 के नीचे ही रह रहा है जब तक, तो वी विल बी हैविंग एन ओपिनियन और अ व्यू कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब तक ये ऐसा कुछ डोजी कैंडल नहीं बनाता है और ऐसा ब्रेकआउट नहीं मारता है, राइट, तब तक हमारा व्यू चेंज नहीं होगा। मतलब तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं इसको एग्रेसिव, जब तक वो EMA 8 को क्रॉस ओवर नहीं करता, वापस ऊपर नहीं। हाँ, तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आप 21 को पकड़ के चलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, इतना आपको थोड़ा स्पेस देना होगा उसको परफॉर्म करने के लिए। बट ये 8 इज लाइक वेरी एग्रेसिव। अगर आप कुछ डे ट्रेडिंग में हाई वॉलेटाइल कुछ ट्रेड कर रहे हैं और उसको एग्रेसिवली ट्रेल कर रहे हैं, सो दैट यू डोंट लूज ऑन योर प्रॉफिट्स, सो यू विल यूज दिस। ओके, सो कितना टाइम इसके बाद लगेगा, फ्यूचर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन ओनली रिएक्ट टू आवर मेथड। ओके, दैट्स द थिंग। Okay, So thank you. yeah, so what I was saying is कि ये 820 One more thing. On the same slide, UD, I understood up and it is considering a 50 days period, 22 days it is up, 28 days it is down. Correct? yes, correct. And UD ratio, can you just reiterate what exactly you are considering volume here? 22 days when it is up, I multiply the volume to Okay. 22 days.
and 28 days when it was down. So वो red Okay. candles में जो भी volume है, I multiply that, and then Okay. I divide that by them by 50. Like weighted average लिया है, 22 into up volume, 28 into down volume, divide by 50. It's Okay. saying कि the days it is up with higher volumes. Okay. Okay. So it is rising with, ये देख रहे हैं आपको विजुअली भी दिख रहा होगा, ये बिग ग्रीन बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. हाँ, so it is going up with fine. good volumes. Okay. So it is even though number of updates is less, volume is positive, so it is considered as more bullish. Correct. Yes, agree. Yeah. Okay. Okay. Good. So Thank you. अभी यहाँ पे फ्री फॉल जैसे हो रहा है, तो यहाँ जब तक आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि 15 into 35 and very negative number of UD ratio. So I see. Okay. आपको ऐसा ऑटोमेटिकली दिखेगा. हम देखेंगे अभी बाकी के स्टॉक्स में. Good. Good. Thank you. So what I was saying कि ये Fibonacci numbers इसलिए मैं use करता हूँ. Even it is seen in our solar system, galaxy, and even in sunflower, the pattern of the leaves or the petals, उसमें सब में ये एक universal phenomena है. इसको आपको चाहिए तो आप यहाँ पे Fibonacci आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में. Fibonacci numbers in फ्लावर्स इन सोलर सिस्टम, आपको बहुत सारा कुछ ये देखिए सनफ्लावर में भी ये इट फॉलोज द फिबोनाची रिलेशनशिप, फिबोनाची नंबर्स इन सोलर सिस्टम, फिबोनाची सीक्वेंस इन सोलर सिस्टम. इट इज अ यूनिवर्सल थिंग. सो दैट इज वी इज जस्ट यूजिंग दैट. कोई सीक्रेट नहीं है ये, यहाँ लिखा है सीक्रेट ऑफ सोलर सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेडिंग में. बट कुछ नंबर नहीं है तो चलो ये वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि समथिंग इज वर्किंग यूनिवर्सली. एंड व्हाट इज फिबोनाची नंबर्स इज 1 + 1 = 2, एंड 2 में फिर हम प्रीवियस नंबर ऐड कर रहे हैं, but it becomes 3. 3 में हम previous number add 2 ऐड कर रहे हैं, it becomes 5. 5 में we're adding 3, it becomes 8. 8 में we're adding 5, it becomes 18. And it like work on 8 with 8, 13, 8 and 10, 21. It works like this. So we've used 18, 21, 55, 144. People use 200 days moving average typically, but मैं 144 का यूज करता हूँ. 144 के नीचे कोई भी स्टॉक है, never invest in that type particularly. ठीक है, it's a pure say no kind of a stock. Okay, and then 51 maybe if you're having position, we were just waiting, we couldn't exit 51 के नीचे, damn sure going to exit that stock. जितना भी फायदा नुकसान है, don't care about that. Okay, so these are the numbers we are using. This is the reason for that, using those numbers. You can always choose your own set of numbers. There is a science behind these numbers, so I'm using this, working fine, very good. And a reason I've also explained in these crossovers, I've explained to you, and how to check fundamentals, etc. also we explained. So we are done with this part. Till here we are good. Till here, if you have any question, you can now ask me, because now we'll go and deep dive into the main topic. I wanted to say. I have a question. Sorry. Yeah, go ahead. I have a question, Mohit. This indicator that you put volume, price, and fundamentals, that has the inbuilt moving averages as well as the other two panels, right? That came up. Yeah, it's inbuilt. Okay. All right. Thank you. Yeah, so fundamentals and moving average, price, and all the volume information, relatively how the volume is behaving from 50 days, everything you will get to know in one snapshot. Okay, so that's the one. Anything else, or shall we move ahead? Anyone, any question till here? No, I assume there is no question. So now we'll talk about exit. We will still be discussing, right? Going ahead. Yeah, exit will still be discussing, but one of the main criteria or filtering
apart from the indicator, there is, if you also look at this, we'll see, we'll get very cautious when 821 crosses there, and definitely will not be holding anything below 50 period moving average. जैसे कि ये वाला green line is 55, sorry, I misspelled, it is not 50, it is 55. इसके below closing पे we're not going to hold anything यहाँ पे, for example यहाँ पे इसके like Bajaj Finance below 50, it just then you are just holding this whole period. यहाँ पे value investors buy करेंगे, averaging करेंगे. We are not going to do that. We are out of this whole all pain, the पूरा painful process. We'll be coming back when the system is telling us again when we need to come back. Okay. Mohit, one question is there. हाँ जी sir, please. Hello. Yes. Yeah. Now we have a universe of so many stocks. So on the basis of this volume, price, and fundamental, do we have any filter criteria for that? We can just got a list of the stocks that are fitting into this all this the criteria of a moving average and the average delivery volume, and this last two column is the up days and down days and up days and down days ratio, so that we can make some assessment and make a watch list that these are the stocks that we have to focus. We can create a screener in charting for this. I have never created one, but we can create. I can create for you guys if you want to. But I am not investing only on solely on this indicator. This indicator, I am trying to explain the concept that we are going to chase uptrending stock, and how to know if there is a good uptrend, or how the slope of the moving average is behaving, and if anyone wants to still see the fundamentals, although we are not bothered about fundamentals, neither the stock name or what kind of business they are doing, but still, if they are anyone wants to see, everything will be visible here. It's one complete dashboard for everything. One question is there, Mohit. Mhm. In such cases where we are not bothered about even the name or the products or services that the company is offering, such stocks, they say that we can never find the exit door when something goes bad. It will always be LC, continuous LC. Then how do we quit? No, the continued LC will be mainly in the operator stock. So if you have seen this Google sheet that I've shared, we'll talk about हाँ, it. okay. यहाँ पे on the left side, these are all. Let me zoom in, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा. So यहाँ पे we have all the large and mid caps. Okay, इसमें there is less probability that you will get lower circuits, because these are very good volumes are there in these counters. In this one, these are all small cap till 250. Okay, and it is very unlikely जो हमारे momentum में stock में आ रहा है, उसमें immediately there will be lower circuits. There can be an unforeseen event, black swan event for sure, if something happens overnight. Okay, if that cannot be predicted, but you can still, as I said, I do not watch it fundamentally यहाँ पे, because fundamentally is required if you're holding a company for, let's say, the next 5 years, next 3 years, next 5 years, then you need to see the fundamentals of the company. If you really know that you will be exiting the moment there is a caution, or the system is asking you to exit, then the weightage, the giving the value to fundamental is less important in my opinion. Okay. Okay, thank you. Okay. Any question or from anyone? Shall we go ahead? Yeah. So Mohit, I had a question. So at the start of the call, you were saying that you need to get out of losing stocks. So how do you know that? Like, I think you are giving example of this bank. I am still stuck with this bank actually. So I was thinking that maybe someday it should revive, but obviously it does not happen. So I mean, in your alpha chaser and all, you would have identified that this is kind of losing stock, and you should book your loss and get out. Yes. We'll talk about it, and we'll also talk about when we come here rebalancing.
then we'll talk Okay. about. If we have let's say a 10 stock portfolio, okay, then how do you keep watchful eye on that? It's like your cricket team. 11 players are there. If someone is not performing, he'll be kicked out, right? The next performer will automatically, BCCI will add choose him. MK, few people are waiting to join. Okay, give me 1 second. I see only Gulza और भी कोई है क्या? Uh, One is Mr. Vinod Shah. Where do They dropped message in group. I don't see anyone in wait list Okay, right now. okay. Yeah, I don't see anyone. Just checking 1 second. Yeah, narrative is selling ideas. Correct. This, I don't think so. Anyone is there in. You can just tell them that Okay, try to add join again. I'll add them. Okay, okay. if I hear a pop up, because I'm presenting and recollecting my thoughts, so maybe I'm missing on adding someone. So okay, Vinod Shah needs to be yeah, I permitted. just added him. Okay, so I'll check. let's go ahead. So now we're going to talk. Yeah. So I mean, I was talking about how to get an exit method. So we'll talk about that. And one of the very initial reason I discussed on this particular indicator, this just normal is very basic thing, right? Moving averages base. So moving average base पे भी आप exit कर सकते हैं, but there is another line in the indicator which is this small line. इसके basis पे भी we will exit it. ठीक है, जहाँ पे वो हमको एग्जिट दे देगा. So now let's talk about alpha chaser. We're coming to this section now. So first of all, what we need to do is we need to go to Nifty. इसको मैं हाइड कर देता हूँ सब कुछ. ठीक है, we go to Nifty. मैं पहले जैसे दिखाया आपको need to go to M score indicator and get its ये ATH और ATL देना है आपको. These are nothing but these are so momentum investing में बहुत सारे स्टाइल होते हैं. There are very good research papers published on momentum investing and why it works, and some of them कुछ दिन पहले मैंने लिंक भी शेयर किए थे. So what we are doing is there is some method, some calculation. It's pure maths, pure statistics. उसके basis पे we are doing, and we just want these two dates, ये ATH ATL. ठीक है. अगर मान लीजिए निफ्टी का अभी तो ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं हुआ है, अगर ये वाला ऑल टाइम हाई जब क्रॉस हो जाएगा, तो अभी क्या है कि जैसे कि आप अल्फा चेजर में यहाँ जाएंगे, सो ये डेट्स हम यहाँ डाल देते हैं, ईयर मंथ एंड डेट ऑफ द हाई, ईयर मंथ एंड डेट ऑफ द लो, यहाँ से पिक करके. अगर आपको मैनुअली ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये इंडिकेटर आपको बता देगा. तो Mohit, this will be 52-week high low. हाँ, दिस इज 52 वीक हाई लो. ठीक है, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपको बता रहा है. ठीक है, इसका पर्पस यहाँ खत्म, इसका कोई काम नहीं है इस इंडिकेटर का. यहाँ पे इट हैज गिवन यू द डेट्स. सो अभी क्या है, ये इंडिकेटर में अभी आप देख रहे हैं कि इसकी प्लॉटिंग जो है, देर आर टू काइंड ऑफ प्लॉट्स. एक ये स्मॉल लाइन है एंड देर इज वन बिग लाइन. सो ये जो बिगर लाइन है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अल्फा. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने अल्फा दे दिया. और एक ये छोटा नाम है, इसको आप बोल लीजिए मोमेंटम बोल लीजिए, मैंने कुछ नाम स्पोल्स रख दिए ऐसे, तो हम इसको मोमेंटम रख देंगे. ठीक है. सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज कि जहाँ से प्रीवियस ऑल टाइम हाई जहाँ से निफ्टी का लगा है, वहाँ से आर पर्टिकुलर स्टॉक शुड बी जनरेटिंग सम अल्फा. एंड यहाँ पे what I was trying to say, if Nifty का new all time high comes, let's say tomorrow, 5th of June, then Mohit, I am stuck up. You please explain once again from where you are getting these plots, means alpha chaser and this M score.
I'm not finding it in the trading view. Yeah, Alpha Chaser is one of custom development my Okay, okay, indicator. okay. The other ones that I showed, like the volume price and M score, those are all published by me in the public library. So what I'm was trying to say is यहाँ पे जाके पहले M score से आपको ये ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो निकाल लेना है, ठीक है। Okay, ये fine, fine. दोनों डेट्स लेके अल्फा चेजर में यहाँ पे जाके यहाँ डाल देना है ऐसे। अगर अभी जो इसमें प्लॉट देख रहे हैं वो प्लॉट यहीं से शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से। ये 1 दिसंबर जो ऑल टाइम हाई का डेट है। लेट्स से इफ आई मेक दिस डेट टू 23 एंड 5 जून कल का डेट, तो यहाँ पे पूरा प्लॉट गायब हो जाता है। बिकॉज आई एम सेइंग कि कल इसका ऑल टाइम हाई लगा है। ऐसा सिचुएशन अगर हो जाता है कि जहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई लग गया है, ठीक है, एंड वी डोंट नो दैट अभी जहाँ प्राइस है वो एक्चुअली में अब न्यू ऑल टाइम है कि नहीं, राइट। कल अगर हम लोग 19,000 चले जाते हैं तभी हमें पता नहीं है कि 19,000 ही ऑल टाइम हाई है वो 52 का कि नहीं, क्योंकि उसके बाद वो ऊपर भी जा सकता है, करेक्ट, वी डोंट नो। तो उस पर्टिकुलर केस पे वी विल स्टिल यूज दिस प्रीवियस डेट, okay. We will put this 11/12/2022 for our plot to come. ये एक स्टेप लाइन है। ये स्टेप लाइन में क्यों है, ये स्टेप लाइन बता रहा है कि स्टेप्स बेसिकली ये वो स्टेप बता रहा है कि ये नीचे आ रहे हैं स्टेप्स और ये ऊपर जा रहा है स्टेप। तो विजुअली थोड़ा राइजिंग है ये देखने में मिलता है स्टेप लाइन से, ठीक है, और ये फॉलिंग है ये भी आपको देखने को मिलता है स्टेप लाइन से। अभी फॉर एग्जांपल एक अच्छा गुड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आईटीसी ले लेते हैं जो परफॉर्म किया है। जो ऐसे भी स्टॉक देखेंगे जो नहीं परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला क्राइटेरिया है हमारे लिए, राइट, इसको मैं हटा देता हूँ। इसका पहला जो क्राइटेरिया है वो है ये दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी अबव 30। यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं, मैं एक बार इस इंडिकेटर को ना बंद कर देता हूँ, राइट। दिस शुड बी अबव 30। ये यहाँ पे जैसे ये 30 के ऊपर जाएगा इट विल स्टार्ट प्लॉटिंग इन ब्लू कलर, ओके। एंड ये जो स्मॉल लाइन है इसका आपको छोटा प्रिंट मिलेगा अभी, बट एज ऑफ डे लेट्स से ये यहाँ पे ब्लू लाइन ये आजू है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला अभी ग्रीन में चल रहा है। जब ये जीरो छोटे वाला 0 एंड 5 के बीच में रहता है, इट इज काइंड ऑफ अ वेटिंग पीरियड, ये वेट जोन में रहता है। जैसे ही 5 के ऊपर रहता है देयर इज टेंडेंसी कि वहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। और ये जब तक इसके बीच में रहता है तो इट इज सी इफ यू वांट टू डू एग्रेसिव, तो अगर ये ब्लू में है और ये ग्रे में भी आ गया है, आप वेटिंग में नहीं रहना चाहते तो आप एंट्री करिए। बट अगर ये रेड में सस्टेन करता है तो आपको एग्जिट करना है, ठीक है। ये छोटा वाला लाइन रेड में आ जाता है तो एग्जिट कर देना है, या फिर ये वाला जो लाइन है जैसे ये वापस ब्लू से वापस ग्रे में चला जाता है, तो ये ग्रे ग्रे पीरियड इज लाइक बीच का, नाइदर वाइट नाइदर ब्लैक, इट इज ग्रे, राइट। सो ये वेटिंग पीरियड हो जाता है हमारे लिए। but as soon as it breaks up above 30 and this is above 5, the smaller momentum line, and हमारा जो अल्फा का लाइन है it is above 30, तो हमारा वहाँ एंट्री कंफर्म हो जाता है, ओके। टिल हेयर विद मी, Got it, got it. okay. So यहाँ पे what has happened here in this particular counter is although अभी everyone knows, like अभी तो stock चल गया है तो it will be unfair on my part to say कि देखिए आप लोग ने ITC में इन्वेस्ट नहीं किया, ITC कितना अच्छा किया। That is not the idea I'm trying to say. What the idea that I'm trying to pitch in here is, when a certain stock is tending to show you some momentum and some that it has potential to generate alpha, आप इस पे यहाँ पे भी जाके देखेंगे। ये देखिए बैक टू बैक ये दो तीन क्रॉसेस लगे हैं, राइट। जो मैंने पहले भी कहा कि बैक टू बैक 2-3 कैंडल में क्रॉसेस लगे तो वहाँ पे मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता है, थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन वगैरह भी लगा लेंगे चैनल वगैरह, तो आपको वहाँ पे भी एंट्री वगैरह मिलने लगेगा, करेक्ट। उसके बाद में स्लोप्स देखिए, इसका आप ट्रेंडिंग है,
right? It has never kind of given a convincing weekly kind of a close below 21 period moving average. So it has continued to generate alpha for the people who are invested in ITC versus Reliance. अभी Reliance देखते हैं, ठीक है? One minute, Mohit. Mohit, 1 minute. Can you 31st January 23? Background noise. Much of disturbance. दिलीप जी म्यूट कर दीजिए, विनोद जी म्यूट कर दीजिए, मैं कर देता हूँ. Yeah, go ahead, Jaya ji. Yeah, 23rd of Jan 23, the blue step line showed its way above 30 Correct. index, above 30 point, but the small one didn't appear even between the 0 to 5. So Yeah. how do we interpret? अभी नहीं दिख रहा है आपको स्मॉल लाइन, बट व्हेन वील बी ऑन दिस पर्टिकुलर डे, तभी जैसे जैसे अभी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? एंड देन लेट्स से इट इज स्टिल इन ग्रे, एंड यहाँ पे जाके एंट्री मिलता है, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन में आता है या यहाँ पे ग्रीन पे आता है. Still if you enter, can you do a bar replay, Mohit, just to understand? नहीं, बार रिप्ले इसमें मैं करके दिखा देता हूँ. इट विल नॉट वर्क बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डेट, द कोड इज बेस्ड अपॉन डेट्स. सो लेट मी शो यू. अच्छा, ओके, लेट मी शो यू. वो काम नहीं करेगा. वो देखो इतना सही दिखाएगा क्योंकि वो कोड में स्ट्रक्चर ऐसा है पूरा, राइट? ओके, ये देख लीजिए, ये बार रिप्ले है. तो 30 के अबव, बेसिकली 30 के अबव इज आवर एंट्री. अभी ये शॉर्ट टर्म है, ये यहाँ पे स्टिल अभी नियर बाय में यहाँ पे इसमें एंट्री आ गया यहाँ, ठीक है? तो अभी वी आर एट 443 समथिंग. ओके, the whole structure is positive, right? Up down ratio 2.61, 34 green candle versus 16 red candles. Relative volume इतना नहीं है, but still the stock is doing very well. Okay, above moving averages, it is very far off above the 144 period moving average. So there is another concept called as mean reversal. For those of you don't know, so what is mean reversal is when a stock goes very far away from its moving average, so it tends to come near to the moving average. Say for example सचिन का या विराट कोहली का बैटिंग एवरेज 55 है, तो वो बहुत दिनों से सेंचुरी बना रहा है, ठीक है? या उल्टा बोलते हैं, बहुत दिनों से वो जीरो पे आउट हो रहा है, बट वी ऑल नो ही इज अ टेक्निकली वेरी साउंड बैट्समैन एंड अल्टीमेटली ही विल स्कोर रन्स. तो अल्टीमेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड विराट कोहली will be on 55 या 60 plus minus some numbers, वो अपने एवरेज पे आएगा. करेक्ट? यूनिवर्सली ऐसा होता है, राइट? Similarly in stocks, when they go way far above their what we call as moving average, they come and do mean reversion. जैसे कि यहाँ पे it went सीधा एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया, ठीक है? बट ये टाइम वाइज करेक्शन में फिर चला गया. क्या होगा? या तो टाइम वाइज करेक्शन में हो जाएगा, या तो प्राइस करेक्शन हो जाएगा, या फिर टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगा. टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगा तो मूविंग एवरेज इसके पास आ जाएगा. स्टॉक नीचे नहीं गया है क्योंकि स्टॉक बुलिश था, स्टॉक नीचे नहीं गया है, स्टॉक साइडवेज हो गया, तो मूविंग एवरेज इसके पास आ गया. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये परसेंटेज डिफरेंस ऑफ द स्टॉक प्राइस एंड द मूविंग एवरेज वुड बी लेस अगेन, right? So what we are trying to say is anything when it is very far off from above the moving average, it there is highly likely कि वहाँ पे तो एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि it is likely that it will do mean reversion. Either you will be stuck for time wise correction, इतना पूरा टाइम में वो फ्लैट रहा है, या फिर it will do a price correction. Okay, so this is the how do you calculate R volume? It is the volume today based up versus the 50 days average. So 50 days average के हिसाब से जो आज वॉल्यूम हुआ है वो it's kind of 80% of that volume. Okay. यहाँ देख भी सकते हैं आज
का इतना छोटा सा ही कुछ वॉल्यूम है. Okay, so this is this. So till here, so now what we have seen is ITC kind of created some alpha for investors, and those who have hold it, it's given better than Nifty returns in ITC counter. And now we'll switch to another example of Reliance. Both are like Nifty 50 stocks, इसीलिए मैं उसको pick कर रहा हूँ. I have no hard feelings with the Reliance investors or मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है. अच्छा fundamentally good company, everything is there. So what we see here is ये रेड में यहाँ पे चला गया, राइट? इट इज will you invest in this यहाँ पे, या अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है एक बारी के लिए तो आप बाहर हो जाएंगे. उसके बाद में आपको ये 821 का क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे भी आप कॉशियस हो जाएंगे. थोड़ा बहुत अगर आपको फंडामेंटल कुछ आता है, थोड़ा बहुत आप ये सब कर लेंगे, मूविंग एवरेजेस लगा लेंगे खुद से, राइट? बट यहाँ पे इट इज बिग नो. ये भी आपका स्मॉलर मूविंग एवरेज, हालांकि यहाँ पे इफ यू सी यहाँ से it has gone up, right? But still it has not gone up as compared to the broader market. ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, राइट? एंड रिलायंस इज अ हैवी वेट, द बिगेस्ट वेटेज इन निफ्टी इज गिवन टू रिलायंस. तो रिलायंस ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट? अभी थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, बट निफ्टी 50 में बाकी और भी स्टॉक्स हैं जो इससे बेटर कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 को ऊपर लेके गए हैं, बट रिलायंस ने उतनी हेल्प नहीं की है निफ्टी 50 की. सो इट्स स्टिल शोइंग इन रेड. So understanding two counters, okay, we are just comparing their price behavior over a period. उनके बिजनेस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं. एक सिगरेट एंड होटल्स का FMCG काउंटर है, दिस मेनली इन ऑयल एंड गैस एंड अदर एरियाज. सो वी आर नॉट ट्राइंग टू कंपेयर बिजनेसेस, वी आर नॉट इवन सीइंग व्हाट नेम इट इज. हम सिर्फ चार्ट पे बोलते हैं ना भाव भगवान से, हम वो भाव को देख रहे हैं कि भाव कैसा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल मार्केट से. ओके, सो यहाँ पे क्योंकि Mohit, या प्लीज गो अहेड. this alpha chaser, do we have to change the settings value for each? नहीं, it'll be same date. Once you've applied the date, you don't need to change it. Okay. Okay. So irrespective of the stock that. Irrespective of stock, we don't need to change. And this, I forgot to mention this will work only on daily time frame, and I personally look at alpha chaser on weekly basis. मतलब हालांकि daily chart लगा हुआ है, I look on weekend, go through my Google sheet, go through some of the charts, filter them out and see कि what needs to be thrown out and what needs to be put in. Okay, what on Monday opening you can do that, or if you have time in between Friday closing you can do that. Basically rebalancing of your portfolio, we'll see that. Okay, so But we'll have to put the 52-week high low for each of the stocks, right? no, only Nifty. You're comparing with Nifty. Acha, we are comparing only with Nifty. Okay. Yeah, comparing alpha. Mohit, one question I had is, mm, for example, we are looking at Reliance chart. So you had the red crosses, and then you had the deep Green. red ones down. Yeah, no, down. There, the one where it was a sell, and then down below also it was a sell. Here. But do we actually empty the whole portfolio, or like No, what's your personal feel whether we should empty 50%? नहीं, if you are doing that covered call, वो सब कर रहे हैं. No, I'm not doing covered call. If you I'm having 250 numbers of Reliance, for example. yeah, Do I dump all the 250? But just because I saw, yeah, that's what we do. oh my gosh, No, why? oh my gosh, You tell me why? Oh my gosh, why we need to because be it's like it's a dream company, it's a big company, it will come back. You think that way, right? yeah, But why? You have seen it's not working, right? Live in front of you right now. Okay, अभी चार्ट बन गया तो बात कर पा रहे हैं, but if let's say if we know that the things or our parameters are not this
See, this is my system. You don't need to buy my idea. You need to question No, me. no, no. Yeah, yeah. I just wanted your personal Yeah, it's view. good. It's good if you question me, because that way the more juice will come out of the meeting. So what I'm trying to say is, if some system is telling कि यहाँ पे एग्जिट कर दो, तो एग्जिट करना है. अगर वो बोलेगा एंट्री कर लो, तो रिलायंस में ही वापस आएंगे. रिलायंस से वी विल नॉट Oh. कीप दुश्मनी कि रिलायंस है तो क्यों हम बाहर कर रहे हैं, राइट. बट वो नहीं बना रहा ना पैसा. वो उसकी जगह यू कैन पुट मनी इन सो मेनी अदर काउंटर्स. That's true. Mm. अभी everybody is talking about टाटा मोटर्स है, बट टाटा मोटर्स में उससे पहले But okay, one last question before you show us Tata Motors. In the principal way of the value investing versus momentum investing and thematic investing, can't we actually a partner a trader can he or she also not be a value investor and a trader wearing two caps? he can be, of course. I mean, it's everyone's own kind of style of doing things. Okay, I am not recommending a certain style of investing. We are just comparing things here. Okay, it is very much likely possible that what you see, let's say Reliance goes to 2100 tomorrow, and you see some value there, you'll immediately jump and buy a couple of shares, and then from that point ये पूरा यू टर्न लेता है और बहुत ऊपर चला जाता है, 3000 हो जाता है, राइट. सो देन यू विल से कि यार एम के तुमने 2100 पे बाय तो नहीं बोला है इसमें, बट देखो आई हैव बीटन मोमेंटम इन्वेस्टिंग. that is very much possible. But in as we say, right, कि अभी आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और एक स्टॉक को यहाँ से पकड़ेंगे, तो the hurdles. Let's go back to Reliance. अभी ये यहाँ पे है, there is a hell lot of, यहाँ पे इसको सप्लाई मिलेगा, ठीक है, उसको फिर यहाँ सप्लाई मिलेगा, तो उसको जाने, उसका काइट उड़ने के लिए वो यहाँ ट्री में फंसेगा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में फंसेगा. सो there are challenges in front of it. Whereas there is another stock we just saw, it is in I don't see hurdles, right. Malab, it's already in the 5th story or the 10th story of the building now. But Mohit, one question about Reliance. The moving average of 8 is still higher than 21 and 55. Yes. So there's still showing the uptrend. So should we not stay invested there? No. It is coming in a short-term reversal. Okay. The whole overall market has come from 16,800 to 18,600. So of course, without Reliance. No, I'm talking of the Reliance. Yeah. No, I'm talking generally as well. So when the generally market has come up, the Reliance is the biggest heavyweight of the market. It has also pulled up in some shape, but it has not come up in a relatively stronger manner than others have been rising. What are those others is something that we need to find, and if we can invest in them and stay invested in till the point where it is making good alpha, genetic good alpha for us, and then we try to rebalance our portfolio accordingly. So that is the whole concept here. Can we see Hero Motors on this? Yeah, Hero Motors is both actually. Hero Motors and another one, Bajaj Auto. These two-wheelers are starting to appear up for a couple of weeks now. So Hero Motors was one last year a big lagger actually, and now it has started to come up. So if you see, after it has come into this momentum thing, it is strongly going up, right? इसका यहाँ पे भी moving averages, crossover, etc. is there, but इसमें जो है ना blue line is still missing. You can take an aggressive entry of 30 की जगह 20 कर लो. I'm not saying कि 30 is the universal number here, but that is something where I have seen. अभी हम क्यों 30 पे क्यों आएंगे हम, राइट. व्हेन यू सी दिस गूगल शीट नो, जहाँ पे इतने सारे स्टॉक हैं, आपको इतने सारे स्टॉक्स मिलेंगे, देन यू विल बी थिंकिंग कि यार so many stocks are there, but I just only want to invest in 10 of them, for example. Right. So I need to have a certain threshold. I need the best of the best, kind of a. How do I see the best of the best? So
कंपैरिजन थोड़ा करके वो 30 मेरे को एक लगा थ्रेशोल्ड, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग और बैलेंसिंग करके तो हम कर रहे हैं अभी ये इसमें इट इज गोइंग वेरी गुड। इवन बजाज ऑटो बोथ द टू व्हीलर्स, बस एक पॉइंट ये है कि these आर ऑल ऑटो स्टॉक्स। द किंग ऑफ द किंग दिस इज यहाँ पे इसमें एंट्री हो गया, कहीं यहाँ पे मोमेंटम आ गया और यहाँ पे इसमें एंट्री भी हो गया, ठीक है, यहाँ इस कैंडल पे, राइट। अभी क्या है ना, जब जैसे आपका ये यहाँ तक कैंडल बना है, यहाँ तक बना है, एक मिनट मैं बार रिप्ले करता हूँ। It's just it's a psychology point I'm going to touch now। देखिए यहाँ पे ये इसमें ब्रेकआउट मिलेगा, राइट, और मेरे जैसे लोग ग्रुप पे चार्ट शीट करते हैं फिर, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक है, राइट। तो अभी आपको लगेगा यार वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या बोलेगा, अभी जैसे जया जी बोल रही थी कि यहाँ पे जब नीचे आएगा तो मेरे को तो यहाँ लेना चाहिए था, अभी पर नहीं लिया, अभी ये ऊपर है तो लग रहा है महंगा है। सो देर इज इनबिल्ट साइकोलॉजी कि ये बहुत महंगा है, इसमें मैं फंस जाऊंगा, बट वी हैव नॉट सीन द फ्यूचर इसका यहाँ से, right? Nobody can see the future on this date when we are 11th of April. We haven't seen the future. It's coming in our threshold. We haven't seen the future, and the first thing हम सब बोलेंगे हाँ चार्ट पे ब्रेकआउट है, एक्चुअली ये अगर टेक्निकली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ था, ऐसा पैटर्न से कप एंड हैंडल पैटर्न काइंड ऑफ से ये ऊपर निकल गया यहीं से, ठीक है। अभी लगेगा कि महंगा है, बट there is a counter Reliance who still have not making money, but ये महंगे वाला भी। So what is momentum investing? Momentum investing is buy higher and sell more higher. It is not buy low and sell high. It is buy high and sell even higher. I get your point. Correct? So अभी इसको बाहर रिप्ले करने का जरूरत नहीं है, we already know where it is right now. I just finish down। ये 8 पीरियड को देखो कैसे ट्रेस कर रहा है। If it is in strong uptrend, it will कंटिन्यू टू होल्ड दिस, और 21 के नीचे आएगा तो विल बी वेरी वेरी 821 का क्रॉस हो जाएगा तो विल बी वेरी कॉशियस, या फिर हमारा ये वाला जो लाइन है ये रेड में चला जाएगा, राइट, ये वाला जो स्मॉलर वाला है या ये जो ब्लू वाला है वो ग्रे में वापस गिर जाएगा। सो दीज आर ऑल एग्जिट क्राइटेरियाज। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑटो स्पेस, अभी तो सब टाटा मोटर्स एंड एवरीथिंग पीपल आर टॉकिंग, वो ईवी नैरेटिव एंड एवरीथिंग इज देयर, right? But the stock that everybody may have missed is TVS Motors। ये लास्ट ईयर से अभी तो यहीं तक का हिस्ट्री है, बट इवन इफ यू हैव समवेयर इन्वेस्टेड यहाँ कहीं पे जहाँ पे हमारे फिल्टर्स में आ गया है, यहाँ कहीं पे भी, so it is doing very good। बट लास्ट ईयर से अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, it did very well। It for a very long time it was making very good alpha। ये इतना बड़ा 600 से 1000 रुपीज वाला मूव था इस पे, एंड देन ये यहाँ पे एग्जिट दे दिया था 821 क्रॉस, राइट। ये डोंट थिंक दैट आई एम राइट नाउ टॉकिंग, क्योंकि चार्ट बंद चार्ट है तो इट इज इजियर टू टॉक इन हाइंडसाइट, बट व्हेन यू विल एक्चुअली सी द पैरामीटर्स एंड हाउ दे बिहेव, you will understand what methodology of buy higher and selling even higher and yeah, can you have a look at SBI? Mohit, Mohit, this will, I mean, Alpha Chaser will only be helpful for long term, I mean, for long only, right? Not short, right? Only cash investments only. Okay. No, I mean, can we other way around? Supposedly the chaser line steps are going down in the red zone. Can we be considering it for the short entries also? अगर आपको or FNO stocks? मुझे पता था FNO क्वेश्चन माइट कम अप। सो बेसिकली इफ यू हैव टू शॉर्ट इट, तो ये वाला जो लाइन है ना, छोटे वाला लाइन, इस पे अगर आपके रेड में चला जाता है ना, तो एक बारी के लिए जैसे कि स्प्रेड बना के काम कर सकते हैं, बियर स्प्रेड। एग्जांपल जैसे अभी कोई है क्या बियर काउंटर? बायोकॉन I'm not traced it lately, but yeah. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें तो खैर इतना बड़ा गिर गया, हिस्ट्री नहीं है मेरे पास इतना, बट ये यहाँ पे भी कहीं पे भी रेड में हो गया होगा, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा स्विंग हाई के ऊपर में यू बाय अ पुट एंड देन यहाँ पे सेल अ पुट, यू मेक अ बियर स्प्रेड एंड वट एवर यू वॉन्ट टू राइड द ट्रेंड यू कैन यूज हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस। और जो डेफप्रो मेथड में हमने एक टेक्निक सीखी थी,
if somebody has not seen that Pro वाला video, please do watch. Whenever you are free, कि जब भी वो डोजी कैंडल टाइप बनता है और उसके ऊपर we tend to come out, तो that technique also you can follow to trail. Okay. 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 So because what you see यहाँ पे ना कि ये वाला लाइन ये यहाँ पे जाके ऊपर आ गया है, बट ये यहाँ सी आपको जल्दी एग्जिट करना है, राइट? इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, ये ऐसे ट्रेंड में जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ट्रेंड पे एग्जिट करेंगे, बट अगर आपके पास कुछ टेक्निक्स हो, जैसे हैमर बन गया, ये डोजी बन गया, और अभी यहाँ ये स्लोप घूम गया, 8 के ऊपर चलने लगे अभी हम, राइट? तो आप यहीं पे कहीं पे थोड़ा एग्जिट करिए, नहीं तो नहीं भी करेंगे, थोड़ा वो डिले होगा तो एक ग्रे लाइन पे एग्जिट कर लीजिए. That was a climax candle, the red one, the large red one. करेक्ट. You can use it in that way. बजाज फाइनेंस भी देख लेते हैं, वो भी आपका आया था उसमें. हिस्ट्री नहीं है इतना, बट इतना हिस्ट्री है यहाँ पे. ये यहाँ पे रेड में जैसे आया ना, ये यहाँ से छोटे वाला, ये रेड में गया, तो ये बियर में रहता तब तक. ओके, बट आई डोंट recommend any FNO इससे, but just since you asked. Yeah, fair enough, fair enough. And typically, what is I mean, from your experience of since whenever you have been testing this, what is the average move that you are looking to get into this? I mean, it's an upward of 15-20%, or नहीं, we will continue to hold as long as okay. it is fulfilling the criteria. So, but whatever the trades that you have taken on this, what has been your logical way of so on an average kind of a scenario? Yeah, I'll talk about that when we come to this Pareto Okay. principle. Sure. Yeah, I'll talk about it. So anyone else? यहाँ तक कोई question? I think I have explained Can you this. check SBIN? Okay. SBIN is right now, I think. It's in blue line. Okay. So it is in blue line और ये अभी grey में है. So if it starts to show some momentum, then it is very good. It is nearing to its all-time high, right? It is nearing towards its all-time high. So it has come in blue. So यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रे में आ गया, राइट? यहाँ पे ये बैक टू बैक 2 क्रॉसेस भी हो गए, तो वी नीड टू एग्जिट यहाँ पे, अगर हम इन्वेस्टेड थे तो यहाँ पे. ठीक है. और इफ यू नो टेक्निकल, थोड़ा बहुत टेक्निकल में वो लोग जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह लगा लेते हैं ऐसा, तो यहाँ पे उसके हिसाब से भी एग्जिट बनता है. ठीक है. सो दैट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग सम टेक्निक, कि अगर आपको टेक्निकल नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत एडुकेटेड. एसबीआई में अभी एग्जिट कैसे दिख रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है मुझे. नहीं, अभी नहीं, अभी तो पहले का ये जो सर पूछे ना, तो यहाँ पे ये एग्जिट जो था ये यहाँ पे था, जहाँ पे जो 2 क्रॉसेस भी आए थे. आई सी नॉट नाउ. हाँ, अभी तो ऊपर है, अभी तो ब्लू में आ गया है, और वो ग्रीन में भी आ जाएगा, तो वो अच्छा खासा उसमें मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी है. ऑलराइट. सो एनी अदर एग्जांपल यू वांट टू सी, या फिर मैं एक बार गूगल शीट्स के में से ही पिक न्यूक्लियस देखेंगे. न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर. After that, Titan, Mohit. हाँ, टाइटन तो आ गया है अभी ना. न्यूक्लियस की क्या स्पेलिंग है? NUCLEUS. यूजुअल न्यूक्लियस. ओके. सॉफ्टवेयर. ओह वाओ, ये तो रॉकेट हो गया. Yeah, I'm holding in cash, so I just wanted to understand when to sell off. So ये आपका कुछ यहाँ पे somewhere here it came in here, देखिए ये ग्रीन में हो गया somewhere here, तब से ये चल रहा है सर. अभी तो होल्ड करिए आप इसको, you don't need to book it, होल्ड करिए. Okay. ये 8 पीरियड के जब तक ऊपर सस्टेन कर रहा है, जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है. वो 1140 से 1400 1600 हो जाए, you never know. Oh, great. Yeah. Can you check HBL power? HBL. Yeah. HBL power. ये तो फ्लैट दिख रहा है सर, एकदम रिलायंस टाइप का बिहेवियर दिख रहा है इसका एकदम फॉर लास्ट ईयर ऑन सो. So अभी it has come in kind of a green here.
तो थोड़ा सा और मोमेंटम आता है इसमें, तो देन वी कैन सी, बट स्टिल थोड़ा सा मतलब टेक्निकली है, इसमें थोड़ा सप्लाई एरियाज है, ये जो जोन है, Okay. दिस काइंड ऑफ अ जोन, राइट? Okay. Yeah. I I got think it. Apollo Hospital that I posted a day or two. I think that's just come into the momentum. Apollo Can we see Hospital, that? yeah, Apollo Hospital gave a breakout यहाँ पे, ये just given this breakout और दोनों में आ गया है ये यहाँ पे. Can we buy then on Monday if there's a Yeah, fall, if there is a dip a or something? retracement to breakout level, you can then buy. Yeah, retracement. I said, don't take my. I'm not a registered analyst, but sharing my technique. So what I'm Yeah, trying to sure. say, I cannot advise, right? But I can just only talk what system is saying. Okay, so let's. एक आपने टाइटन बोला था ना, टाइटन भी देख लेंगे, टाइटन भी ठीक चल रहा है. टाइटन came in here. Let me draw a line. ये यहाँ पे ग्रीन में आ गया और ये यहाँ पे आ गया, यहाँ समवेयर, उसके बाद से इट इज डूइंग गुड फ्रॉम 2550 से 28 86 यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस. ये भी 21 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया, अभी ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर गया है. सो स्टॉक लाइक्स दीज आर गिविंग सम अल्फा ओवर निफ्टी. The best counter in FMCG was not ITZ, it is Varun Beverages. This is Varun Beverages. इसका आप देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है बहुत टाइम से, राइट? अनदर PSUs में देयर इज PFC REC. PFC REC, they are doing very good for a very long time. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा ये रेड में चला गया, ओके, एंड देन यहाँ पे एग्जिट, बार बार एंट्री एग्जिट री एग्जिट री एंट्री एंड एग्जिट दिया, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड, अगर हम यहाँ से 1 दिसंबर निफ्टी के पीरियड से कंपेयर करें, निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से इस डेट से नीचे है, वेयर एज दिस पर्टिकुलर स्टॉक it's going towards the moon right now. Okay, another is REC. These are good dividend paying companies, तो सोने पे सुहागा टाइप वाली बात है. REC, oil and gas में there is IOC that was coming up. IOC is coming up. IOC यहाँ पे देख सकते हैं ये, right? And I think when I recorded that video, I did show कि एक ही ग्रुप की दो कंपनीज में अलग अलग बिहेवियर भी होता है. You see, there is one wealth destroyer that was here for a long time, Aditya Birla Fashion, right? It is in deep red. Okay, so whosoever invested, kind of everyone is stuck, right? जैसे कि कल हम उसमें बात कर रहे थे बिरला सॉफ्ट, so everyone is stuck. Whereas in the same group, Aditya Birla Capital, Aditya Birla AB Capital, same group, another stock is doing well. A different business, but the same group. So these things also do happen. So, but investors go by the, if they go by the name, then which one to invest. And अगर आदित्य फैशन में फंस गए हैं तो you need to have an exit mechanism, right? तो यहाँ से ही ग्रे में चला गया था, right? यहाँ यहीं पे ही. तो फिर उसके बाद तो कुछ एंट्री कभी आई ही नहीं इसमें. Check the Adani groups. Is it possible to check Adani groups? Adani Power or ports was coming in. Adani Power, इसमें momentum is still back यहाँ से, right? But it is in it has basically, if you held it for a year or so, still having it, then it has not created wealth. Okay, that is the reason you see this particular line, step line in red. But lately from March onwards, there is an up move यहाँ पे, तो it is, this green line is showing कि हाँ there is starting to revive, right? Similarly Adani Ports, so
अदानी पोर्ट्स अभी रेड में है, so उससे बेटर अदानी पावर वाज देयर. बट द आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि ये इट केम इन ग्रे जोन, उसके बाद ये क्रॉसेस भी हो गए हमारे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? एवरीथिंग इज Mohit, I think a few weeks back I had posted Amara Raja. It had shown both these lines had exceeded the criteria you had set, but within a day or two it turned down and it went off into gray, and the other one went off into the watch. no worries. So like, If it goes below this green line, no, 55 ka, which is hardly like 2% move left. मतलब 2%, it is the distance is 2%. Then yeah, then I suggest you exit. Okay. Oh, okay. It's okay. I mean, thank you. See, you will when I'll talk about. Okay, let me bring that topic थोड़ा पहले. So let's say you portfolio, momentum portfolio, we'll discuss later. So let's say 1 equal to plus 1 plus. भाई एक बार बिरला सॉफ्ट की देख लीजिए. हाँ, वो भी देख लेते हैं. So let's say you have these 10 stocks. Okay. So what Pareto principle is says कि even in businesses, so you have these 10 stocks. Okay. What it says is कि out of 10 stocks, the 20% or the two stocks will create 80% of the wealth for you, and the remaining 80 or the remaining eight stocks, they'll just come and go. So for example, you have ITC and other good company. They have created the chunk of the wealth for you, but then you also had in between come and go stocks like this one, what we just saw, ये वाला, Amara Raja. Adani, they'll come, they came and they go. They made some alpha, some took away some money, some gave some money, but ultimately they did not neither created huge wealth, neither destroyed huge wealth. They just came and go. But the majority part is given by 2 or 3 stocks only. And तभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते कि मोहित, what kind of a move are you looking? Are you looking for 10% move, 15% move? I said no. As long as it is going up, I am interested. I'll stay invested. But as long as it is, if Aditya, sorry, this one, not Aditya Villa, Amara Raja is saying me to exit, then I need to exit this stock. I'll be happy to give away a couple of bucks to it, and rather find another good stock and put my money into that. Okay, so that is momentum portfolio. Okay. So what is Nifty? What is Nifty 50? It is, this index itself is a momentum index. Why it is doing for a very long period, number of years, very well? Because the NSE itself, stock exchange itself, brings in the winners in the 50 stocks and removes the laggers out from the 50 stock. Recently, it brought in Adani, I think, Power or Port, I think Adani Ports, and it removed Shri Cement out of it. So as soon as any stock, if it is removed out of Nifty 50, it immediately gets attention, and people who are holding it, not people like you and me, they're people with big money, they beat Shri Cement देख लेते हैं एक बारी. अभी अभी तो revive हुआ है. I'll tell you what idea I'm trying to. Give me a few minutes. I'll explain the concept. ठीक है, अभी तो ये रेड में है, ये यहाँ पे रेड में चल रहा है, कोई एंट्री नहीं है. बट few couple of months back, it was removed from Nifty 50 index, and then it gets heavy beating. Any stock जो FNO में से, काउंटर में से निकल जाता है, it is there in 200 list of FNO, and एक्सचेंज बोल देता है आज से FNO में ये 6 स्टॉक आ गए और ये 4 स्टॉक FNO में ट्रेड नहीं होंगे. People who are holding, doing covered call, blah blah blah, कुछ भी करते हैं, वो FNO से बाहर हो जाता है. That creates a negative sentiment when people dump their stocks. तो उसमें immediately sell off आता है.
I was also trapped in one of these. The stock name was Pfizer. It was in FNO counter, doing very well. वो पूरा COVID theme narrative में मैं भी था. But then it was removed from the FNO list, and after it was removed, there was a huge sell-off in that stock. Okay, so this what I'm trying to say. Nifty 50 itself is a momentum index where exchange will keep on rebalancing the 50 stock. It Nifty 50 depicts India story, right? The Indian investment and growth story. It is reflected by our index, right? जैसे हम निकाई देखते हैं या डाउ देखते हैं किसी का, so how they've been rising falling. So for for an outsider, it creates a perspective of the nation, how the growth story is there. And I should not say people also look politically, किसके political party में कितना performance आया वैसा भी compare कर रहे हैं, but will not go into politics. But this Nifty 50 is very good. Why people say कि ETF buy करो और बैठ जाओ, safest way है 12-13% बनाने का, because it is a momentum index in itself. But there is a very hard effort by fund managers to beat Nifty 50, because Nifty 50 अपने आप में ही momentum है. तो एक momentum index के ऊपर में आपको और momentum alpha generate करना है. It is a tough job. It's not an easy job. For that's why bunch of the fund managers are unable to beat Nifty 50 returns over a very long period. All right. So what I'm trying to say, Pareto, in the Pareto principles, in businesses also, we deal with a lot of clients. In businesses also, 20% of their business processes creates the 80% of the revenue for the firm. Okay, and the rest 80% of the business processes or materials or whatever they're doing, it is just operational. But those 20% are the strategic ones, the key ones for the firm to have its existence. So similarly, if you apply that analogy to momentum portfolio, those in वो 10 में से वो 2 या 3 स्टॉक ही ऐसा है जो आपके लिए वेल्थ बनाएगा, बाकी सब कम एंड गो होता रहेगा, आपको रीबैलेंस करना है. Okay, did I explain this point? We'll talk about rebalancing when it come here. Just stressing upon why we continue to hold a particular stock. For example, ITC, it is 420. You never know वो कहाँ चला जाएगा. अगर वो कल को 500 600 भी हो जाएगा तो हो जाएगा ना. We will be just looking it. But the person who is actually holding in his portfolio is the person who is making some alpha over it. Correct. So now enough of Gyan. So let's do one thing. We'll quickly talk about this Google Sheet. Some of you would have gone through it. Some of you would have not gone through. मैं इसमें quickly बता देता हूँ. So इसमें एक बारी filters हटा देते हैं. On the left side यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा आपका mid cap large cap है. Nifty, Nifty 50, next 50, mid cap 200 plus. Okay. ये वाले स्टॉक है और ये वाले स्मॉल कैप है. स्मॉल कैप 50 कैटेगरी में है, कोई स्मॉल कैप 100 में है, कोई स्मॉल कैप 250 का पार्ट है, एंड सो ऑन. सो इसमें इफ यू सी एट द टॉप इट इज रैंक्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फा. सो अभी इट्स वेरी इजी फॉर मी कि यहाँ से मैं आपको कोई भी स्टॉक उठा के दिखा के बोलूँ कि हाँ देखो इंडिकेटर तो बहुत अच्छा काम करता है, राइट? ऐसा मेरा वो आइडिया नहीं है, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल IDFC फर्स्ट बैंक, ये तो ग्रुप पे भी हमने डिस्कस भी किया था पहले भी. एक मिनट. IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है. IDFC फर्स्ट बैंक, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ. ये टेक्निकली भी यहाँ पे आ गया था. यहाँ पे ये चार्ट भी शेयर किया था ग्रुप पे हमने. उसके बाद एवरेजेस का क्रॉसओवर भी हो गया था और यहाँ पे ये ग्रीन में भी आ गया था. तो वो 57 वाला स्टॉक अभी 72 73 तक चला गया है. सो इट इज मेकिंग मनी फॉर द पीपल हु आर राइडिंग. वो 8 मूविंग एवरेज के भी नीचे नहीं आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है वो, राइट? Another stock. You can still enter in this? No, I'm not saying to enter right now. Entry came in and
April, when only I think Gupta ji in the group, I don't know if he's in the meeting or not today, but he and I we did it उस पे. But Okay. यहाँ तक गया, उसके बाद 60 something पे even I could not able. I had an FNO position, तो मुझे भी लगा एक बार के लिए बुक करना चाहिए. कैश नहीं था मेरे पास, तो यहाँ पे बट it continued to perform as long as it is. If you had this in your, let's say इसमें 10 lakhs है आपके पास में, 10 lakhs में से टोटल 10 लाख है और आपने 10 ही स्टॉक रखने हैं, तो एक आपने IDFC रख लिया एक 1 लाख का, ठीक है, 1 lakh. So like that you will continue to hold these counters as long as they are making money. So आपका अपने आप से यहाँ पे 10% आप इसका पे एलोकेशन हो जाएगा. इक्वली आप एलोकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी में नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एन इंडेक्स आउट ऑफ इट. मतलब रिलायंस को 20% देंगे और बाकी को इतना नहीं देंगे, वो छोटा स्टॉक है, वो बड़ा स्टॉक है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, इक्वल अपना एक. आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट दिस मोमेंटम पोर्टफोलियो. ओके, अभी गूगल शीट पे आई गो बैक. सो विल गिव इक्वल वेटेज, इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी काउंटर. ये यहाँ पे आईटीसी में थोड़े लगा दिए, थोड़े आपके टीवीएस मोटर्स में लगा दिए. अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्टॉक्स जो अच्छे चले हैं, ताकि जस्ट टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, नॉट सेइंग कि कभी कल जाके इसमें लगाना है किसी को. ऐसे ऐसे आपने अपना पोर्टफोलियो बना दिया. अभी इसमें से कुछ ये वाले स्टॉक है, लेट्स से ये जैसे एक्स वाई एंड जी, ठीक है, आपने वीकली परफॉर्मेंस देखा इसमें और उसको सॉर्ट किया. आपने वीकली परफॉर्मेंस देखा, इसमें 3% आया, इसमें 2 आया, इसमें 1 आया, इसमें 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 माइनस 0.5% है. ऐसे आपने सॉर्ट किया ना. हालांकि ये नेगेटिव है, बट इट हैज नॉट गिवन एन एग्जिट, यू विल स्टिल होल्ड इट. बट इफ इट इज नेगेटिव, गिविंग यू नेगेटिव रिटर्न्स एंड सिस्टम में भी एग्जिट आया है, तो हम क्या करेंगे, ये गूगल शीट में आ जाएंगे वापस में. और यहाँ पे पहले तो ये फिल्टर है, ये मतलब विल सी, ये ऐड वाला फिल्टर है ना यहाँ पे, ये यस और नो, ये यूज कर लेंगे. अभी क्या इसमें सारे बहुत सारे स्टॉक है, ये 194.5 मिड और लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं. ये जितने भी नीचे वाले स्टॉक है, देखिए ये आपके सब सॉर्टेड है. पिरामल, ये सारे आपके जो स्टॉक है ना, ये देखिए रिलायंस भी घूम रहा है यहाँ पे, जी एंटरटेनमेंट भी घूम रहा है, बड़े बड़े नेम्स भी है, लॉरस लैब्स, ये रिलायंस, लाल पैथ लैब, ये कोविड टाइम का बहुत चल रहा था. ये सारे नॉट परफॉर्म. अभी इसमें से रिलायंस में फंडामेंटली इट्स वेरी गुड. जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो बोलेगा कि इट इज बेस्ट टाइम फॉर मी टू बाय रिलायंस, ठीक है. उस परस्पेक्टिव से आपको देखना है तो वो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा, आपको अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, करेक्ट. बट अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है, तो हमको क्या देखना है कि पहला बात, आपका जो पोर्टफोलियो है उनमें ये वाले स्टॉक है कि नहीं. ये डैशबोर्ड है. ये डैशबोर्ड क्या है, ये रैंक 1 से लेकर के ऐसा 30 स्टॉक तक है. तो कोशिश हमारा ये रहना चाहिए कि जो भी हमारा कैश का पोर्टफोलियो बन रहा है, उसमें हमारे ये वाले स्टॉक होने चाहिए, IDFC, अपोलो टायर, REC, ITC, एस्ट्रल, व्हाटएवर, सीमेंस. अगर नहीं है अभी तो ये, क्योंकि अगर ये वाले स्टॉक नहीं है, दैट मीन्स यू हैव मिस्ड जो स्टॉक जो चले हैं, यू हैव मिस्ड देम, राइट. स्मॉल कैप में भी देख लीजिए. अभी स्मॉल कैप के चार्ट में दिखाऊंगा तो इट क्रिएट्स क्रेजी काइंड ऑफ अ रिटर्न्स. अभी बाद में देखेंगे स्मॉल कैप, अभी एग्जांपल लार्ज कैप के देख रहे हैं. सो अगर ये नहीं है तो वी हैव मिस्ड इट, राइट. अगर मेरे पास टीवीएस मोटर्स नहीं है तो आई मिस्ड इट. मेरे पास ये नहीं है, HAL नहीं है, आई मिस्ड इट. सो अभी मिस कर दिया तो ठीक है. बट अगर अभी अगला इसमें से लेट्स से कल DLF बाहर हो जाता है फॉर एग्जांपल, और DLF की जगह कोई और आने लग जाता है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हो जाऊंगा. वो मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए. सो व्हाट आई गो एंड सी, ये इसमें ना, ये जो अल्फा वाला जो लाइन है, ये मोर और लेस आपका मैच करेगा. लेट्स से BEL देख लेते हैं. फिर रैंडमली पिक कर रहा हूँ मैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. नहीं मोहित, हमको एक चीज बताएं कि जैसे अभी मान लीजिए कि हमको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपना 10 का पोर्टफोलियो बनाना है, तो हाउ टू सेलेक्ट आउट फ्रॉम दिस गूगल शीट.
because IDFC first has already moved up already moved. substantially. So already So how to select those 10? yeah. You have this momentum dashboard is just कि ये वाले stock has performed. They may be right now highly valued at this particular point of time. Not saying that they cannot go up, they can still go up. But what I'll say is ये इसमें लास्ट स्टॉक देखिए कौन सा है, इंडिया मार्ट है, ठीक है, रैंकिंग में लास्ट है इंडिया मार्ट। अब आप डेटा शीट में आइए, वेयर इज इंडिया, पहले तो फिल्टर कर लेते हैं येस पे, येस पे, ठीक है। अब उसमें इंडिया मार्ट कहाँ है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। सो all these stocks till rank 30 are gone already, they moved, we have missed it। for example अभी जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंडसइंड बैंक, इंडिगो, आई डोंट नो जिनेश यू आर ऑन द कॉल, जिंदी माय फ्रेंड इज होल्डिंग इंडिगो, ये ले स्टॉक्स आ रहे हैं आपका। एक्साइड इंडस्ट्रीज अभी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, टाइटन का चार्ट देखा हमने, राइट, आईओसी के बारे में, ये स्टॉक्स आ रहे हैं। आपको थोड़ा यहाँ पे जाके फोकस करना है कि ये वाले स्टॉक, ये लूपिन भी आ रहा है बट एक्चुअली सी लेट्स से लूपिन देख लेते हैं एक मिनट, बट लूपिन में अभी लूपिन ये यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, तो अगर थोड़ा सा इसमें करेक्शन मिलता देन वी कैन एंटर। वैसे तो इसका काइंड ऑफ ब्रेकआउट ये यहीं कहीं हो चुका है इस लेवल के ऊपर पे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो स्टॉक निकल गए हैं वो तो निकल गए। मोहित सर, हाँ जी हाँ संजय बोलो। Lupin, if you see, just taken your example only, Lupin, if we see the score is 47%. Go back to that sheet. I'm trying to relate. How do we like 43%? हाँ, इसमें एक चीज और है इसमें सर, ये जो शीट में ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्कोर्स में मिलेगा। अल्फा अभी जैसे ल्यूपिन है 43 है, अल्फा में आपको स्कोर्स में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि द वे द डेटा वी गेट इन गूगल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिविडेंड्स का भी थोड़ा प्ले होता है। लेट मी शो यू, एक में यहाँ पे जाके ना ये इस पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे लेबल्स में जाना और यहाँ पे वैल्यूज में जाना, वैल्यूज में तो यहाँ पे देखिए ये 43.6 आ रहा है ये वाला, और यहाँ पे कहाँ गया गूगल शीट, ये यहाँ पे भी हाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा। कोई बात नहीं, that doesn't matter. What I'm trying to say is, if we see the chart now, going to the trading view, so there if we see that Lupin has already moved a bit. Correct. Go back to the chart now. Yeah. So how do we relate that? In what percentage? If we see this chart, we will find, or a thought will come to mind that Lupin has already moved quite a lot. So, but at 43 level. God knows it may move to 100 level or 110 level. Yeah. We don't know. Yeah, correctly. As I said, अभी ये स्टॉक महंगे लगते हैं, अभी ये ब्रेकआउट हुआ, राइट, हमारे जैसे फिल्टर्स में ये यहाँ पे आ गया, ये ग्रीन और ब्लू दोनों ऑलमोस्ट ये यहाँ पे हो गया, राइट, इस कैंडल पे, करेक्ट, यहाँ पे। बट आई सी यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको आता है कि थोड़ा देख लो ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बेसिकली प्रीवियस टॉप सब कहाँ पे है, वहाँ एक लाइन लगा लीजिएगा, वहाँ देखिए वहाँ रिएक्ट किया, फिर ये ट्रायंगल पैटर्न बना आपका, ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है आपको ये वाला, उसके बाद दिया तो यहाँ पे एंट्री बन जाती है काइंड ऑफ, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ आपको ना, ये शीट को यूज करना है, जो चल गए हैं वो तो चल गए अभी, ठीक है, उसके बारे में अफसोस नहीं कर सकते अभी हम, पर जो चलेगा जो आएगा, मेरे को वो चाहिए कि मेरी नज़र मैं टाइम वेस्ट तो सब पे नहीं कर सकता हूँ वीकेंड पे बैठ के, मेरे को चाहिए कि ये 10-15 में चार्ट थोड़ा देखूँ, थोड़ा समझूँ, हाँ, जो आ रहे हैं कि कहीं पे मेरा एंट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नियर 30 अबव जैसे हमारा एंट्री है तो दिस आर ऑल नियर टू 30, ये वाले नीचे से आप देखेंगे, क्योंकि अगर आईटीसी जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कोई ग्लेनमार्क ले लेते हैं, ठीक है, फार्मा टू फार्मा कंपेयर कर रहे हैं, ग्लेनमार्क ले लेते हैं, अब ये ग्लेनमार्क भागा है, अभी ये ग्लेनमार्क यहाँ पे भागा है इस वाली कंडीशन पे, ठीक है, ये यहाँ से निकल के भागा है तभी तो यहाँ तक गया है ना। अगर वो लुपिन को भी ऐसा जाना है
जिस दिन मैं यहाँ पे हूँ उस दिन आप कहोगे कि मेरे को ग्लेनमार्क यार महंगा लग रहा है, ये ब्रेकआउट तो हो गया पर 460 का कौन बाय करेगा इतना महंगा है, क्योंकि आवर ब्रेन इज ट्यून्ड इन दैट वे कि महंगी चीज नहीं खरीदनी है, करेक्ट। बट मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आपको थोड़ा साइकोलॉजी शिफ्ट होता है, करना पड़ता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन ओवर अ जूम कॉल। वो आपको जब भी करेंगे तो आपको दिखेगा। मैं नहीं कह रहा कल से लगा दीजिए, पेपर ट्रेड करिए, चीज़ों को देखिए ओवर अ पीरियड। अभी तो बुल रन आया नहीं है, निफ्टी 50 भी अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, बट स्टिल देयर आर स्टॉक्स, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो रही हैं। दिख रहा है फार्मा में, आपको दिख रहा है ग्लेनमार्क फार्मा में, आपको ओरो फार्मा दिख रहा है, और फार्मा देख लेते हैं। तो ये भी तो यहीं से निकला है। अगर इफ ग्लेनमार्क कैन डू दिस जर्नी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ल्यूपिन कैन आल्सो मेक दिस जर्नी, देयर इज पॉसिबिलिटी। बट इफ इट इज नॉट, इफ इट इज गिविंग मी एग्जिट, ग्रे में आ रहा है, रेड में आ रहा है, या मेरा क्रॉस हो गया, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं एग्जिट कर देगा। बट अगर ये, अगर इसको जाना है, अभी औरो फार्मा देख लेते हैं, उसको जाना है तो वो जहां तक जाएगा मैं जाऊंगा। दिस इज औरो फार्मा, सो ये यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो उसको जहां तक जाना है मैं जाऊंगा उसके साथ में। Did I answer your question? I mean, it's actually what, when I give an explanation, it may sound थोड़ा सा अजीब, क्योंकि I am asking you to buy a stock at ऊपर के भाव पे, right? ऐसा थोड़ा, क्योंकि this is unconventional. I don't know if I am able to pass on the right message of. It's not bottom fishing, right? Because bottom fishing is the buy when it's very low. But This is we buy higher and sell higher. yeah, we will never know where is the bottom, and even in the momentum investing we will never know कि where is the top. तो थोड़ा तो मार्केट को देना ही पड़ता है। टॉप एंड बॉटम तो मैं तो नहीं ढूंढ पाया। That person, no, Mohit, Alok, what's his name? Alok. He is the master of this momentum investing, right? He comes on. हाँ, मिस्टर Alok Jain. Yeah, Alok Jain. His PMS now through the momentum, it's really a big winner. Yeah, compared to Basant Maheshwari's and all, which is value investing. But even Basant Maheshwari believes in buy high and sell higher. Yeah, I believe in momentum investing, so I am sharing this. Maybe good, maybe not, but this, I mean, it may sound little अजीब, क्योंकि मेजॉरिटी, अब 100 में से 90 लोग बोलोगे तो 90 लोग बोलेंगे ये बहुत नीचे है तब बाय करेंगे, इतना ऊपर नहीं बाय करेंगे। बट एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो वो इट कैन कंटिन्यू टू राइज, उसमें इंटरेस्ट है मार्केट का, तभी वो बढ़ रहा है। लोग उसको यहाँ भी खरीद रहे थे, लोग उसको यहाँ भी खरीद रहे हैं, लोग उसको अभी भी यहाँ भी खरीद रहे हैं। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी ये देख रहे थे बिग बिग कैंडल बन के जा रहा है, करेक्ट। सो द ओनली पार्ट इज एंट्री सब करा देगा आपको, कोई ना कोई टेक्निक, कोई चार्ट भेजेगा, कोई टेक्निकल भेजेगा, कोई इंडिकेटर भेजेगा, कोई न्यूज़ बोलेगा, बट एग्जिट नहीं कोई कराता है। Mohit? हाँ सर। Yeah, I get, when I put Arvindo in my chart, I get different value for alpha. Why is it like that? एक बार सर ये डेट्स चेक कर लीजिए आप, ये इनपुट्स वो सेम है। अच्छा, टाइम सॉरी फ्रेम, टाइम फ्रेम भी देख लीजिए, डेली पे रखना है। 112 एक बार दोबारा देखा दीजिए। अच्छा 12 How to subscribe to this Alpha Chaser? Yeah, I'll you just message me on WhatsApp, I'll reply. Okay, got it. Sorry, I had the 12 and 1 reverse. Mohit, we'll have to subscribe to the Excel sheet and the indicator separately? No, it's the same thing, sir. See, पहले मेरे पास इंडिकेटर नहीं था, ऐसे गूगल शीट, अभी गूगल शीट क्या है ना, ये स्टैटिक वैल्यू है, करेक्ट। इट विल टुमारो, इट विल अपडेट। सो मैं ऐसा एंड ऑफ वीक देखता था, बट टू टेस्ट द हिस्टोरिकल फ्लो ऑफ द थिंग्स, राइट, तो फिर मेरे को पूरा बैठ के इसको कोड करना पड़ा सिस्टम को विद एग्जिट क्राइटेरिया। नाउ गूगल शीट मैंने आपको समझाया, इसमें आपको
आपका एम होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डैशबोर्ड वाले स्टॉक्स में आ जाए, ठीक है। आपका पूरा एफर्ट उन्हीं स्टॉक्स को ढूंढ के लगाने में होना चाहिए कि योर स्टॉक्स इज यू हैव वन ऑफ दो स्टॉक्स विच इज इन द डैशबोर्ड। और वो डैशबोर्ड से जब भी बाहर होने लगता है तो आपको थोड़ा अलर्ट भी होना है। फॉर एग्जाम्पल ये एस्ट्रल है, एस्ट्रल इज नॉट नो लॉन्गर इन डैशबोर्ड आफ्टर 1 वीक, तो थोड़ा देखिए उस पर चार्ट वार्ट पे जो मैंने टेक्निक्स है, वॉल्यूम प्राइस वाली, हायर हाई हायर लो पैटर्न्स नहीं बन रहा है, मूविंग एवरेज का क्रॉस आ गया है, 50 के तो नहीं नीचे हो गया है, तो वो थोड़ा देखिए। और अगर आपको रीबैलेंस करना है तो फिर ये डेटा शीट में लेफ्ट साइड में मिड कैप लार्ज कैप मिलेगा, ठीक है। ये पिवट टेबल भी मैंने कुछ बनाए थे, जैसे ये 27 20 वाले, बिलो 30 वाले पिवट है ये। ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील कल इंट्राडे बहुत अच्छा किया था। ये पिवट मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा अभी, इट्स नॉट I wanted to create like by segment pivots, 200, and by sector also I'll create some pivots. हाँ, so one thing I forgot to mention is कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोविड के बाद हुआ, और ऐसे इंस्टेंसेस होंगे कि some sector will be the darlings of the market. So after COVID we all know pharma and IT, because IT में पूरा वर्क फ्रॉम होम है, बिजनेस स्टॉप नहीं हुआ, राइट। तो वो पूरा नैरेटिव वहाँ चला गया आईटी में। और फार्मा में ये हुआ कि फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे क्योंकि देयर इज हाई डिमांड फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा, कोविड वैक्सीन। सो पूरा फार्मा एंड आईटी थीम बन गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे गूगल शीट में ऐसे ही स्टॉक आने लग जाएंगे जो उस पर्टिकुलर सेक्टर के, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग, राइट। इफ दे आर परफॉर्मिंग तो हमारे पास वो आ जाएंगे। तो हमको क्या करना है कि हमारा allocation is not too much into a particular sector, ये थोड़ा देखना है हमको। Then we'll be not having a balanced portfolio, it will be sector specific। जैसे कि आईटी जब पीक आउट हो गया उसके बाद में आईटी ने कितना पेन दिया है अभी तक सबको, वी ऑल नो। फार्मा ने भी पेन दिया है, पिछले 2 साल से नहीं चला है फिर वो। So we don't want to, हालांकि we will exit when our condition says to exit, we will definitely exit, but as a precautionary step, we will never want to have any sector very too much focus on one sector or two sector. We'll try to have a little diversification. Okay. So यहाँ पे आपको ये जो है सेक्टोरल शीट है, it is this nothing, this is just for information, this is no fancy thing। it is just saying कि last 1 month में किस which sector has performed in percentage wise, last 3 months में वो कैसा परफॉर्म किया है, 6 months में, 9 months में, 12 months में, right। and then we have done a ranking of that, राइट। अभी लास्ट 1 मंथ में अगर हम देखें तो रियलिटी हैज डन रियली वेल। स्टॉक्स लाइक डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड अदर फ्यू स्टॉक्स, रियलिटी सेक्टर्स के हैव बीन डूइंग गुड। 3 months में भी रियलिटी हैज डन वन। 6 months में भी इट इज इन ग्रीन ओनली, इट्स एज कंपेयर टू द होल बंच ऑफ sectors, okay, or indices, it is doing good। So this is just a comparison of what things are moving in sector wise, how they are looking like। So you can also have a look यहाँ पे sectoral। Mohit, I will need to exit. Sorry to disturb. Yep. Yeah. I will. Okay. Yep. I will connect with you on personal. Yep. Thank you very much. Thanks. Okay, thank you। So so this is about it, and then this is momentum dashboard। This like what are the best of the best world, are you holding one of these or not? Now let's see, we haven't talked about small cap। So what we personally try to do is, let's say मेरे पास 10 lakhs है, okay। ये मैंने although I've shared it, I'll just re-share it again। I'll say 70% allocation large mid। आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं अपना रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, एंड 30% इन small cap। So it is another technique of creating alpha। So 70%, when I say 70% of 10 lakhs is 7 lakh divided into 10 stocks, okay। So 70K in each I put my money, ठीक है, like this। And similarly 30K in these 10। आपको जितना 10 is just I'm taking a hypothetical number, if you want to do 7 का 7 7 14 और 7 and 8, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आपकी डिस्क्रिशनरी चॉइस के ऊपर।
But I'm just saying कि with 10 lakh of base capital, let's say market gives a certain good correction, अभी 18600 से 17500 आ जाता है, and that may be a good point to start your momentum portfolio, right? थोड़ा सा करेक्शन हो जाए तो ऑलवेज अच्छा है, क्योंकि वहाँ से अच्छे स्टॉक फिर आपको निकल के आएंगे. सो नाउ माई, इवन इफ दिस पर्टिकुलर गाय, ये इसमें कुछ 10% का सर्किट लग गया, ठीक है, इसमें एलसी लग गया 10% का, so 10% of 30% is what, 3%. I'll not, my portfolio will be only hit by this much amount. Agar lower circuit भी like worst case में भी, this is basically nothing but I'm saying diversification. Second part is small cap में हम 30% इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि small cap बहुत ज़्यादा volatile है और बहुत ज़्यादा उसका बीटा component जो होता है, बीटा is like if Nifty is moving by 1%, your small cap stock is moving by 3%, let's say. So that is beta, 3 by divided by 1, 3 is your beta. सो वी वांट, हाँ इसमें तो हम अच्छे स्टॉक ढूंढ ही रहे हैं, बट अगर हम इसमें भी अच्छे स्टॉक ढूंढेंगे तो ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देंगे अपने आप में. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ दी, यहाँ पे जो चार्ट में स्टॉक्स हैं, कोई भी हम और भी देख सकते हैं. अभी इसमें आपको ऑटोमेटिकली, यू नो, इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया यू विल स्टार्ट सीइंग पीपल टॉकिंग अबाउट दीज स्टॉक्स व्हेन दिस कमिंग अप. जैसे सेरा सैनिटरी वेयर के बारे में कुछ दिन पहले भेजा था चार्ट, सियाट टायर्स के बारे में भेजा था. लेट मी से सेरा, these are very good stock. Let me just remove labels. So these are यहाँ पे कहीं पे मोमेंटम में जैसे आ जाता है ये 6132 से 7591. Then RVNL was the is at the top stock. Rail Vikas Nigam, Triveni Turbine stock, ऐसे और कौन से थे इसमें, बहुत सारे हैं. बैंकिंग सेक्टर्स के बहुत थे लास्ट ईयर. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, छोटे बैंक्स तो बहुत सारे थे. सी एट एनसीसी इज डूइंग वेरी गुड. ठीक है, अब इस एग्जांपल में इट हैज़ गिवन, यहाँ पे कहीं पे भी सिस्टम वाइज एग्जिट नहीं दिए, बट आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज वाइज आपको यहाँ पे एंट्री दे रहा है, यहाँ पे इस कैंडल पे, यहाँ पे रेड क्रॉस हो गया, राइट. फिर आपको फिर यहीं पे वापस री एंट्री भी करना पड़ेगा अगर वो वापस में ग्रीन हो गया, करेक्ट, बिकॉज इट हैज ब्रोकन द प्राइस. एक शेकआउट किया है तो हमको इमीडिएटली बाहर होना है. ठीक है, 1-8% छूट जाएगा, बट इफ यू सी ये यहाँ से हम पकड़ के अगर बैठे हैं इसको अराउंड 90 रुपीज से हम यहाँ तक भी तो गए थे ना 125 तक, तो 1-2% यहाँ पे दैट इज कॉस्ट ऑफ कैरी देना पड़ता है. सीएट टायर्स, अपोलो टायर्स, this is Seat tires, this is Apollo tires. Tire sector stocks are doing good. One question is there. Huh? I got a question. Yeah. So the exit is basically, the red flag is when the 8 EMA breaches, is it? Yeah, even if the Scoles and the Alpha Chaser are still above the... Yeah, 821 is like, Sorry. you'll be very cautious. Below 50 definitely exit if these are still not giving you exit. Otherwise, if this is giving you in red, then you need to exit, or the blue line step line is coming in the gray zone, then also you need to exit. Yeah, so for the first one is look at the 821 and 51 moving average. If that breaches, then even if the Alpha Chaser and Alpha Chaser and Scoles are above, you need to exit. Yes. Oh, okay.
So that's the reason But then, I started but, it. but then if you look, Mohit, if you look at it only on a Saturday, then if the moving average is already breached on a Wednesday, our reaction for Monday morning will be too late, no? It'll be like 1 or 2%, but you can have alerts if you have uh, like this pro account of trading. You can put alerts also. Otherwise, it'll be not like 1 or 2 days. It's okay. Over a long period, will not. You'll also get some good stocks entry, very good entries also. So that will over a long period kind of nullify each other. Your 1 or 2 late exits and 1 or 2 good entries. Okay, got it. Yeah. Thank you, thank you. So one question. So should we look at companies which have alpha greater than 70? Like, is alpha 70 better than alpha 50? Or like if we are trying to make a new portfolio, or should we focus on alphas like around 30, 40 and then see which companies are there? Yeah, we'll starting off we'll need to see at alpha 30, 40, 30 around, because we want to catch this stock when it is here somewhere, when it is coming here. I mean alpha यहाँ पे तो it is 90 के करीब, but momentum इसका नहीं था, right? ये वाला it was in waiting period यहाँ पे gray में, as I said, but then it, let's say यहाँ पे green हो गया, so I'll be now interested in this particular counter. And so this green thing is also in the Excel part. Like, can we see what's the green value? Like, is Yeah, it green or red? yeah, this Okay. one, this one. But green value ka will not be an exact match because of some working holidays and कुछ किसी किसी स्टॉक में अगर कोई डिविडेंड आ गया है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा in Google Finance and this. So although it will be close enough, but I recommend that you go by the indicator Okay. Like, but what is the value for the green indicator? Like, is it above 5, above above? 5, Okay. above 5. Okay. Okay. Yeah, and Thank you, sir. one thing I missed telling is, so when we are talking on stocks, we are talking 5 for small and 30 for step line, the bigger line. But when we are talking about sector, although we cannot put money in one sector, but let's say if you want to put money in thematic mutual fund or something, right? Then the 30 value will be the zero value for us. For example, स्टॉक के लिए 30 है बट इंडेक्स के लिए 0 है. सो फॉर एग्जांपल कौन सा सेक्टर ले लेते हैं, एफएमसीजी नहीं, ऑटो ले लेते हैं. एफएमसीजी वी डिस्कस अ लॉट. ऑटो, सीएनएक्स ऑटो. सो दिस सीएनएक्स ऑटो, ये although it has not gone below 0, but let's say ये 5 के ऊपर यहाँ पे आ गया, somewhere है 0 और 5 let's say nearby है. So यहाँ पे we will be interested. If it is going from below, it is crossing over 5, we'll be interested in this sector. So इसमें यहाँ पे सेक्टर में अगर 30 पे जाएंगे, क्योंकि we are comparing with Nifty. When we compare a stock with Nifty, we need to have a threshold, a higher threshold. But when we comparing an index versus an index, then it will be a zero line flat comparison in the model. Okay. So इस केस में Got it. ये यहाँ पे आ गया. इसमें 821 का क्रॉस होता है तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं. 21 जब तक होल्ड करता है, we can see auto sector doing very good. Okay. Another space which is doing very good is the consumption space. CNX consumption. This consumption space. Sector to sector doing very well. So we need to find good sectors and then we can also find good stocks. और अगर सेक्टर का ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सेक्टर यहाँ कॉलम आई में भी दिख जाएगा. ठीक है, आपके ऑटोमेटिकली कुछ कुछ स्टॉक्स जो अच्छे सेक्टर चल रहा है तो ऑटोमेटिकली शीट में अपने आप आने लग जाएंगे वो. बट ओनली थिंग वी नीड टू मेक श्योर इज we should not our portfolio is not too centric on one or two sector. Okay. Yes sir. Right. This momentum portfolio sheet, so the column E filter is always set on. Column नहीं, I'll remove this. I mean I just filtered yes to show कि what Okay. are. So once you do it, then I'll remove this. Yeah, I removed okay, it okay. so that you can Okay. also see That's what कि I was need. wondering. Before I was able to see
Because what I was looking for before was those which are between the range of 25 to 30 or 25 to 28, so that we'll be able to catch them up as Yes, they break yes. You can out add of them in watch 30. list and then continue to watch them. Mm. Okay, And so the pivot table, how do we use the pivot table sheet, or it is automatically? my pivot table kind of got screwed. I don't know. Someone, I think I gave added access to someone. So किसी Okay, ने I okay. need to set it again. Okay. Okay, okay, okay. So Thanks. basically, what I'll do is pivot table में I'll set it up by category. Category when I say Nifty, large cap, mid cap, these categories, and then by Mm. sector also. So and arrange these numbers by these two categories so that in an ascending order, so that you can it visually it's become data. Crunching becomes a little easier for you. Okay, okay. Thanks. Okay, and this is all small cap. We can see a lot of I've seen मेरे को बहुत टाइम हो गया बोर हो गया हूँ आपको कोई स्टॉक देखना है तो बताइए अभी नहीं तो what I think what topics And left is coming back to the indicator, like I am having both, what do you call this, alpha and the Red Bull. hmm. So do I really need the Red Bull also to use along with alpha? Yeah, Red Bull is actually a sort of different perspective. Let me just add it. Or should I use both together, or I should नहीं not रेड use? रेड बुल आप कर सकते हैं उस पर भी चेक बेसिकली व्हाट इज रेड बुल ये देखिए यहाँ पे भी ग्रीन हो गया है ये इसमें भी बट इसका थोड़ा सा मेरा वो थ्री रूल का basically this is based upon CAGR, right? Mm, CAGR, mm. I think you might have attended the workshop, so you already know the concept. CAGR के basis पे we are trying to buy when it is below, and then below से नीचे जाता है इसमें three touch rule के basis पे we come into this. So you can continue to have this, and basically what it uh, allows you to do is कि जैसे कि यहाँ ऊपर में देख रहे हो कि अगर आप यहाँ ऊपर में हैं तो ऊपर में Mm. हम लोग ये इसमें रेड बुल में बाय नहीं करते सी ए जी आर ग्रोथ मेथड से इट्स अ मीन रिवर्जन मेथड सो ऊपर में लुक टू बुक प्रॉफिट्स एंड नीचे में इस वाले में दिस इज थोड़ा उल्टा ऑफ मोमेंटिंग इन्वेस्टमेंट एक्चुअली Yes, ओके yes, yes, yes. बिकॉज इट इज मीन रिवर्जन वी आर डूइंग राइट नाउ सो नीचे से वी trying to catch get into the move and ऊपर से we are wanting to get out of this यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से we want to get out but यहाँ पे want to get into it Yes, right yes. ये थोड़ा swing purpose से है I think I have covered यहाँ पे सारा कुछ rebalancing में बस थोड़ा सा एक point बताना रह गया है अगर आपको और स्टॉक्स देखने हैं किसी को तो वी हैव टाइम वी कैन स्टिल सी इफ नहीं देखना है तो वो गंगा इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करना है वो कर सकते हैं बट रीबैलेंसिंग में व्हाट आई वांटेड टू से इसकी जैसे आपके ये 3 या 4 स्टॉक आर नॉट परफॉर्मिंग देन यू विल इसमें जितना भी लॉस जैसे ये 29,000 का 28K हो गया ठीक है ये वाला 27K हो गया ये 29 हो गया so you will take out this money and then you will put this money on the new stocks that you will find okay so that's the only rebalancing tool. This is what you see people like small case investors I'll not take anyone's name जो भी वो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो उनका भी ऐसा ही मॉडल है और वो ऐसे मॉडल पे लोगों को रीबैलेंसिंग कराते हैं वीकली या बाई वीकली basically you'll try and cut your losers very quickly and hold on to your winners till the point they are winners they continue to perform okay and sectors के लिए I've told you it is zero line benchmark even for gold silver it will be a zero line benchmark okay any question or any stocks we want to see further or any topic or any technique or that is still not clear you can ask me so kind of discuss all of this anyone wants to see any stock or any question no? Yeah, Mohit, MK, that I have a question. momentum. Yeah, please Sorry. go one by one.
Yeah, go ahead, sir. Yeah. Yeah. So the momentum Google Sheet is auto updated by the Google Finance, or you make a changes on a weekends. No, no, I don't make any changes. It will auto update it. Only thing is sometimes if a Okay. stock is symbol has been changed, right? DLF का DLF N कर दिया कल को, तो मेरे को जाके वो backend में थोड़ा changes करना पड़ता है कोड वोड में. और if Okay. it is removed out from the list, delisted company, small case की बात कर रहा हूँ. वो अगर स्मॉल केस Yeah. 250 से अगर बाहर हो जाएगा तो मेरे को यहाँ थोड़ा सा रीशिफ्टिंग करना पड़ेगा. बट इफ यू सी दैट देयर इज अ स्टॉक एंड इट इज मिसिंग यहाँ पे, देन यू जस्ट लेट मी नो, वी विल ऐड इट बैक. बट टू Yeah. आंसर योर The क्वेश्चन, आई sum, विल नॉट डू एनीथिंग. ये चलता रहता है अपने आप ही. so the Mohit, summary did of you a take thing that? is that Sorry, go ahead. summary of a thing is that, yeah, we see the broader index number one, we see the sectors, we see the number of stocks which are between the range of 30 to 40, and we see the technical chart that how we can make a position. And then as per the allocation 70-30% large cap and small cap, we can take a position for exit. We can take the reverse of the basically 821, and after 55 you actually completely exit the stock. So this is a Yes. summary of a thing that we have discussed up till now. Yeah, very, very good, sir. I think you got the whole thing. Very good, very good. Yeah. Yeah. I'll just summarize again for everyone. Okay, what sir has said. So basically, first what we saw is the volume fundamental wala stuff, in which we have studied about how to see higher highs, higher lows, upward slope of the moving average. That we'll see. We'll get cautious if 821 moving average crossover is there, and if it is doing that, we'll be very cautious, and if it has closed below 55, we'll exit immediately. Or the alpha chaser indicator values have been suggesting an exit, meaning the blue line is coming into gray or the smaller line is going into deep red. We'll immediately exit that. In terms of how to pick, we'll look around. Sir has said 30 to 40, but you can see around 25 to 35 and see a little bit of technical or little bit of support and resistance if you can just draw, and that will also improve your technical charting experience also. So just see and then make a decision on these stocks, because we know that one or the other two or the three stocks, they will continue their performance from that point of time, and our aim should be to get them into our aim to be holding these kind of stock which are in the dashboard, and these are the stock which have created huge alpha. We want to construct a portfolio of these, and if any stock is giving an exit, we want to immediately exit as per our rules. Happy to give away a couple of bucks, but we want to generate good amount of money. 2x 3x अगर कुछ करना है तो यहाँ होगा, और यहाँ पे तो बहुत easily हो जाता है, right? It's no I mean, it's a decision that we have to immediately take. होप ट्रेडिंग नहीं करना है कि हाँ ये आ जाएगा, अच्छा स्टॉक है ऊपर आ जाएगा. So no hope trading. And in terms of the portfolio, uh, I have mentioned 70-30. You can do 80-20. You want to do 90-10. You want to do 50-50. Give that decision to you. But just explain how we will construct and rebalance. And इनका देखेंगे, इनका वीकली रिटर्न विल डू सॉर्ट में जो सबसे नीचे है उनको वी विल स्टडी दैट आर दे गिविंग एन एग्जिट. If they're giving an exit, we cut these losers and bring the winners back. Okay. So One last question is that do you prefer to use this all these things on a daily chart or weekly chart? daily chart. ये जो इंडिकेटर है Sorry. ना सर, डेली चार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल पोलो टायर का भी दिस वैल्यू इज लेवल्स वैल्यू इज 147. Even if you go one level down, it will still show 147. It is like RSI, जैसे RSI indicator होता है ना, या MACD, that adapts to your time frame. This one will not adapt to your time frame. It has been coded on daily time frame. Even if you go to weekly, it will still say 147.
Okay, so it has been constructed on daily time frame, so that is the thing we need to follow. It will not repaint or not change itself on time frame basis. It is what it is. And as I said earlier, I used to have only the Google sheet to work on it. Now I'm using help of some indicator to visually also see entry, exits, etc. So that Thank you. Lloyd Steel and the small caps you picked up from the Let's see. this नहीं I that I not this picked up from Google. this. नहीं not from Google Sheet. That is Oh, okay, okay. I don't know the spelling. Lloyd. Can you spell that? Lloyd. Yeah, this is cup and handle kind of a breakout it's giving. So ये यहीं पे इसका जैसे एक entry we had यहाँ पे somewhere here on break of this, and then it is doing very well, but now it is further giving us uh, breakout potential kind of a breakout यहाँ पे with this rounding bottom pattern, right? And this is kind of a handle if you want to say it. Not a perfect one, but yeah. So this kind of a VCP structure or cup handle, you can call it, rounding pattern is there. So these are things. If you want to add stocks, it's being performing well, then you can add it with our rules. But if you see यहाँ पे its moving average is just turned upwards because of this big candle, and R wall, if you see, is coming with huge volumes. So this is a good candle, good volume candle. R wall is 220%. Okay, so yeah, looking good. And what was the other counter? Anyone remember? I don't remember. Let me see. It's okay. Yeah, I'm not. Yeah, it's okay. Yeah. Vascon Engineering. That's on. Okay, so this also seems to be already A coming in. cup. So rounding and then going up. Same kind of a structure, right? Yeah, yeah. इसका यहाँ is this big candle, green candle पे Hmm. it's That was yeah, trigger. correct. उसके बाद is good volumes, further more volumes coming. Maharashtra Simlist. Sir, please Maharashtra, share the recording. Maharashtra Simlist. महाराष्ट्र इंग्लिश मोहित जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, Prashant. अच्छा प्रशांत जी. हाँ ये इट इज यहाँ पे ये जो बैक टू बैक ये ग्रीन क्रॉसेस के बाद ये बिग वॉल्यूम यहाँ बना ना, ये इट इज मोमेंटम यहाँ से आ गया, एंड देन इट इज कंटिन्यू टू ग्रीन ट्रेड इन ग्रीन, एंड देन यहाँ पे बोथ हो गया. तो यहाँ पे महंगा लगेगा, बट महंगे के बाद में और महंगा हो जाता है वो. ठीक है, तो इट्स लाइक स्मॉल कैप्स, इफ दे परफॉर्म, show momentum, they can do very well. So that's why we always want to have some uh, सब्जी में मसाला जो डालते हैं ना, अलग अलग टेस्टी सब्जी बनाने के लिए थोड़ा स्मॉल कैप का मसाला भी ज़रूरी है अल्फा के लिए. So that's the thing. और कोई stocks if you want to see, you can see. So if not, then you wanted to see Ganga indicator, Jayaji? If anyone, I mean, we Yes, almost. yes, Moin. Please. Just a few minutes. Yeah, it's already 2 hours, right? Yeah, I mean, if anyone wants to, I mean, we're done with Alpha Chaser. If anyone wants to drop, Leave. please feel free to leave. We'll just finish off with this Ganga indicator. So, Jayaji, what I was saying the other day is, let's say Nifty, and we'll go either with 2 hour or 4 hour kind of a time frame. Okay, let me hide all of this. I was using it on daily because I want to be positional.
You can, okay. So let's see daily also. Mm. Daily. Okay, come here. Yeah. Okay, there are a couple of things here in this. Let me first. I have this PPT with you. Okay, so let me, because that audio was not that great, I'll just quickly cover this first. Yeah. Okay, so you can see here that this is Nifty chart on daily time frame, and market moves in channels. Okay, this downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend. So so there is a friend of mine. I mean, he's in my he's a US guy, chap, but he was in the same project earlier. So we figured it out that okay, we want to trade certain behavior pattern of market, because from historical performances we've seen that market continue to trade in channels. Okay, if we come and see Nifty ka निफ्टी का चार्ट अभी करंट का, एक मिनट ये ड्राइंग से हटा देता हूँ. I'll come to indicator. This is the current channel it is in right now. Okay. Yeah. Yeah. ये जो पीपीटी था वो यहाँ तक था, April something. It Mm. was just coming out till here, and this is the new channel it has formed. So as long as the channel holds true, it is Mm. it is the trend. And these channels, they do not just form in daily, they even form in 30 minutes or 5 minutes as a behavior market banta hai. Okay, Mm. this is one. Now second is, we also know that there are good trend following methodology if we need to follow, then we have to uh, use that. But certain अभी ट्रेंड फॉलोइंग बोले तो सबके दिमाग में एकदम सुपर ट्रेंड आता है, करेक्ट? सुपर ट्रेंड वेरी Mm. स्टैंडर्ड इंडिकेटर. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पे सुपर ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा वो भी है, बेनिफिट भी है और थोड़ा ड्रॉबैक भी है. बेनिफिट ये है, कभी कभी वो फास्ट एंट्री देगा, ठीक है, बट कभी कभी वो आपको बहुत बार एग्जिट कराएगा. बट ये अल्फा चेजर में क्या है कि आपको ये बहुत सस्टेन्ड पीरियड के लिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, इट विल कीप यू इन द मूव. Okay, so this is how Mm. it is on daily. And right now if you see daily में, जैसा कि हम वहाँ पे देख रहे थे, okay, channels बनता है. So Yeah. these are channels that the indicator has plotted, but they Mm. continue to adjust itself, because अभी, Dynamic. हाँ अभी देखो, मैंने मैनुअली जब बनाया तो मैंने ये अप ट्रेंड बनाया या राइट. बट यहाँ Mm. पे Mm. इंडिकेटर में इसने अप ट्रेंड नहीं बनाया, वो बोल रहा है कि ये ऐसा चैनल में जा रहा है. बट वी नो दैट ये Mm. ऊपर ऊपर भी एक चैनल में जा रहा है, करेक्ट. Yeah. वो इफ यू थोड़ा Yeah. सा छोटा टाइम फ्रेम में गो, आपको अभी दिखा ना, ये दिखा आपको चैनल, Yeah. 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 राइट. Yes. So that's the beauty of the thing. This is like multi time frame analysis. तो थोड़ा वो करोगे, Mm. देखेगा. So Mm. as I think someone wants to join in. कहाँ गया. So as market continue to go up and down, ये जो channel है ना, ये ऐसा हिलता रहेगा. It will Mm. it will keep on finding this point, Adjusting. this point, this Yeah. point, this point, and Mm. form and come to shape itself. Okay. Mm. Now Mm. I have seen this channel. मैंने क्या किया, मेरा manually chart पे मैंने इसको जाके draw कर लिया. It is in actually different screen. हाँ, मैंने ऐसे मैनुअली ड्रॉ कर लिया. नाउ द मोमेंट इट Mm. गोज बिलो दिस, डिप टेक्स अ डिप बिलो दिस, Mm. मैं ऊपर से यहाँ Mm. पे थोड़ा कॉल सेल कर सकता हूँ या बियर स्प्रेड कर सकता हूँ. थोड़ा ऑप्शंस में, Mm. इफ आई नो आई एम गुड प्लेयर ऑफ ऑप्शंस, देयर आर वेरियस थिंग्स आई कैन डू. ओके, एंड Okay. if I'm Okay. holding in cash, so I will exit it, for example. Okay, Mm. exit एक बार के लिए exit Rohit, करेंगे. can you mute? सर एक मिनट, प्लीज गो ऑन म्यूट. Let me mute. Okay, thank you. So we'll trade it like this.
there is a channel behavior and there is a trend following behavior. So अभी उस दिन जैसे मैं आपको, जैसे आप यहाँ पे बाय करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक और चीज़ है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। जैसे Yeah. मान लीजिए आप ये यहाँ पे ये इस कैंडल पे बाय आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं बाय कर लिए 17 to 70 मान के चलते हैं, चलो और ऊपर ले लेते हैं 17,300 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे बाय कर लिया आपने इस कैंडल पे। सो व्हाट विल डू इज विल से पोजीशन इज लॉन्ग, निफ्टी का लॉट साइज इज 50, 17,300 पे आई हैव टेकन सम निफ्टी बीज, ओके, एंड देन what you will see here is कि ये वाला लो क्या है, ये यहाँ पे है ना, ये लो 17,300 के, it seems like it is 2% maybe, I don't know, we'll see, and 4%, 1:2 risk reward ratio हो गया अभी, ठीक। whatever you do here is you यहाँ पे आपको दिखेगा risk reward ratio क्या है, Okay. ठीक है। now this thing is coming here, our entry is ये वाली, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो ऊपर है वो, when it has given sell, so if you given exit here and then re-entry here, let's say in this entry exit, sell and exit, क्योंकि we are in 2 hours, so वो थोड़ा exit दे रहा है छोटे टाइम पे, but if we trade on bigger time frame, it is giving much better performance in terms of swing play. For example, if you just kept on holding, let's say आपने यहाँ पे exit करके थोड़ा 500,000 रुपये लूज किया, यहाँ 500,000 पे फिर एंट्री में री एग्जिट में लूज कर दे, इट्स ओके। सो एट दिस इस पॉइंट पे जाके व्हेन निफ्टी रीच 17,992, योर 4% टारगेट वाज हिट, काइंड ऑफ हिट, एंड दिस वाज योर स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस। हाँ, एंड नाउ इफ इट हैज मेड योर दिस हाई हैज बीन ब्रोकन, you will, what you will do is you will shift this stop loss to below this level, ताकि ये वाले को आप यहाँ कर देंगे, ऐसा यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसके नीचे आएगा तो मैं बुक कर लेगा, बट ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ना, दिस इज नाउ लॉक्ड फॉर यू, प्रॉफिट, या प्रॉफिट लॉकिंग। हाँ, सो दिस लाइक नाउ या गो ऑन, सॉरी, no go on. No, yeah, this the thing that you just now showed, right? The feed the, I mean, data entry, the stop loss percentage, profit percentage. Now that is, whenever I'm using it on a cash stock, that keeps coming up. I just say okay. Yeah. I mean, it's actually kept on a bank nifty, some trade which is long back gone. Yeah. But I just say okay. Is it okay? It's okay. That, see, if I remove this thing, okay. Wait a minute. That it asks you as a prompt by default. Yeah, as a prompt, yes. हाँ, कि क्या एंट्री एग्जिट करना है अभी, what happened to yeah. But one thing, may I ask, in Ganga, you got those green hearts, right? That comes normally at the bottom, though you told me over the clarification that disregard it because it repaints, right? Yes, you what you need to do, इसमें यहाँ जाइए स्टाइल में, I know, you should unclick the which one? So, not this. No, the this one of I think the boxes, was it? Sorry. Boxes, yeah. Labels. No, but if I can see that heart, even though it repaints, that could be a small, say a 10% kind of a sip as a value investor, right? So I'll tell you what the background on that one is. So basically, why we put that in. Okay, although I'm telling you, it will not be, have to ignore that because I don't want you to get confused with a lot of data points. So our thinking was, when we had a very deep discussion, कि जब भी वो हार्ट आएगा ना, तभी छोटा सा रिस्क लेंगे, ठीक है, although it will fail, exactly, it will offer huge रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वहां से एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, तीसरी बारी वो ऐसा, मतलब इट इज लाइक बॉटम एंड टॉप हंटिंग, विच इज आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 टाइम्स यू विल फेल, बट वो 3 टाइम्स जब आप पकड़ेंगे तो वो पूरा का पूरा, मतलब
7 times का भी से बहुत ज़्यादा दे देगा because अच्छा. yeah, but I'm not saying that you use this method, but that this is one discussion I had with someone who uh, we built it together, and there's an ideification that goes into each of the indicators, right? So that's the whole thing. So if I show you this, कि अगर ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, तो यहाँ से तो बेस्ट है ना, ये तो बॉटम हो गया ना, ये भी बॉटम हो गया, Oh, बट yeah. कहीं यहाँ पे भी आया होगा, बट वो दोज आर नॉट यू नॉट एबल टू सी देम, बट जैसे ही वो Oh, because it's disappeared. हाँ, बिकॉज इट Uh-huh. डिसअपियर्स नाउ द मोमेंट इट Uh-huh. गोज, तो आपको वहाँ पे फिर एग्जिट लेना पड़ेगा, छोटा सा Uh-huh. लॉस लेना पड़ेगा. Uh-huh. So इसीलिए I don't recommend that to any beginner, because that is like pro, जिसके पास में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड इज अ प्रो, उसके लिए ठीक है. So मेरा there is one friend who got trained from SMB Capital in US. वो करते हैं ये काम, तो उनके लिए ठीक है. अच्छा. हाँ, बट ये लोग इतना टेंशन नहीं पाने का है. Oh, and one more contradiction. This cell, small, this thing comes even when the cloud is green. The cloud, is it a super trend or what? The green cloud. हाँ, it's kind of advanced or modified version of Ichimoku kind of a thing. Okay, this Okay, cell, Ichimoku. So when हाँ, the green, it's in green, right? That means the trend is towards a positive, but it asks us to quit, no? So I was wondering. it should be in red only actually. जैसे यहाँ पे है, green में नहीं आना चाहिए. Red, huh? वो क्या होता है जया जी, sometimes it's a running candle. So Yeah, running candle में it कई बार just वो red बनता है, but comes and goes. close ऊपर हो जाता है फिर वापस. तो we need Mm-hmm. to see on closing basis कि closing basis कैसा है. And Ah. if you're using it on Nifty Bees, as you said, तो इसको 4 hour पे I recommend you to use it, because that way Mm-hmm. it will be much more cleaner. Okay, like if you hold, Mm-hmm. if you buy from here, then you can hold. Now if I apply super trend यहाँ पे एक मिनट के लिए, normal standard super trend indicator. सो सुपर ट्रेंड ये आपको यहाँ सेल दे रहा है, ये देखो यहाँ बाय दे दिया, फिर यहाँ सेल दे रहा है, फिर यहाँ बाय दे दिया, फिर ये सेल दे रहा है, फिर यहाँ पे बाय दे दिया, बट यहाँ सेल करा दिया, फिर यहाँ, तो वो थोड़ा सा तंग करेगा, बाय एग्जिट. तो Ah. तो अगर हम पोजिशनल स्विंग करते So हैं ना, वी कैन होल्ड इट. bees, bees good for 4 hours, is it? Yeah, that's what I wanted to convey, कि use this on either 2 or 4 hours. If you get a 2 hours may exit, then if you get an entry again, then you just re-enter. And how does it look on a daily? I think I won't be able to at 4 hours take decision. That's what. Yeah, daily में it's like यहाँ पे is coming Oh, back. okay. So I'll just completely go Oh. through these PPT ones. Huh? This what I wanted to say. Market is moving in channels. We also want to trade these channels. Channels gets plotted automatically, and the idea of using this channel is, let's say अभी हमने देखा ना वो this Nifty ka, this is the channel. Say if someone, my friend is not great in technicals, we have some ideas, but he's as a drawing channel support, cup and handle, his eyes are not trained, because it takes time. When you spend time with charts, then only your eyes get trained to find and plot these, right? So he wanted a mechanism to have this automated in itself, कि यार बॉस जो भी चैनल है तो मेरे को बता दे अप्रोक्सीमेट कैसा है, बाकी मैं मैनुअली उसमें खुद से ड्रॉ कर लूंगा. मैनुअली खुद से बी आई सी दिस इज द चैनल, आई व्हाट आई कैन डू इज ना, ऐसा ऐसा मैं खुद से एक लगा सकता हूँ, right? ऐसा ऐसा खुद से लगा दूंगा और पीछे पीछे नीचे तक खींच लूंगा. Now I'm rock solid. I know where was the trend. Right. Right? Now I'm good. I don't need this indicator even. He said अभी बॉस मैं अपने आप नीचे जाएगा इसके, तो मैं ऊपर से कॉल वॉल सेल करूंगा, अभी जो भी करना है करूंगा. He wanted to only trade structure of market. So this is what first slide says. So this is what the indicator does it for you. Yeah. Okay, and then Okay. within the channel also there are channels. Okay, this is like मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि चैनल में भी चैनल होता है. ये चैनल में ये ब्रेक करा तो ये इसमें गया, इसमें ये ब्रेक किया तो ये इसमें जाएगा ऊपर. Okay, this is price action behavior. Okay, then this is river based logic. Like
if a river is flowing in a certain direction, until it gets any hurdles, it can continue to flow in that direction. Basically, why this whole thing is named after a river is like this flow logic, कि कुछ बह रहा है तो बस वो बहता हमको उसके साथ में बहना है, राइट? जैसे यहाँ पे देखते हैं, और इसमें एक क्या चीज़ है कि ये वाला एक इसमें दो लेवल होते हैं, एक L1 ऊपर वाला, ये दिस L1 एंड बिलो वाला दिस इज L2, ये क्लाउड का L1 L2. व्हाट साइकोलॉजी और आर थिंकिंग इज कि जैसे ये यहाँ पे लिया सपोर्ट, ये यहाँ पे ब्रेक किया बट ऑलमोस्ट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे L1 पे लिया, यहाँ पे L1 पे लिया, राइट? यहाँ पे L2 पे लिया, यहाँ पे Like a buy on dips then, no? it's like buy on dips. So if you missed it, if you want to re-enter certain quantities, averaging on upward, we never average a losing one, we average the winners. So then we will use these L1 L2 levels to if we want to increase our exposure. So this is dynamic support resistance as I showed you Nifty के chart में. This is weekly time frame. Okay. Okay. Then these are हाँ, इसमें एक static support resistance भी है. So if you go, Yeah, I got that. हाँ, अभी ये आप इसमें ना यहाँ जाके नीचे में शो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ऑन कर देना. Yeah, I keep that I on. just keep, so it will tell you अभी तो we are in 4 hourly but it will go in 1 hour. It will tell you कि you can extend these, you manually you can extend it. Yeah, that's right. So it's kind of Well, this is used only with the index or no? we can do it in any stock. Cash. We can do Any in cash. Titan देख लेते हैं. Any stock you can say, we can check. Okay. Can I leave now? My portion is over. Yeah. I just wanted to say this BO means breakout. Okay. When you see this BO, Oh yeah, breakout and breakdown. Correct. Yeah, this is channels, and just you see how perfectly it is saying breakout यहाँ से, and then it's Titan 1 hourly going up. Can you show the Bharat BPCL, Bharat Petroleum? There was a breakout. I bought it, but then after 2 days gone down, which means sell has come. Yeah. Sell has come. No, not at 1 hour or 1 day, daily. On this one also, if it is not holding this support, then it is channel. आप देख रहे हैं नीचे downward sloping channel. But it's 1 hourly. No, I am correct. 1 hourly is up. Oh, daily is up. Sorry. Daily is up. No problem, right? I'm holding. So where will the SL come for this? SL will be actually you can use this mechanism of trailing method. There is something called as ATR. अभी इसमें है कि नहीं? ATR, yeah. You can use that, or if you completely are trading swings, then just signal to signal भी जा सकते हैं इसमें, या फिर ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता है तो वहां से भी जा सकते हैं इसमें. Okay. Thank you. Hi Mohit, Vaibhav here. I had a question on the Ganga indicator. Yeah. In the settings, you have an option to also show the Yamuna River. What is that and what does it signify? Okay, good one. Let me go to Nifty. I actually never talked about it because certain reason. Let's say go back to 4 hourly. And let me disable support resistance. ये सब बंद कर देता हूँ. Clean chart हो जाए. And let me also close labels. Okay. So basically technicality में नहीं जाऊँगा मैं, वो इचिमोकू वाली. Basically what this shows is कि when basically this is the lagging information of the price. First thing. Okay. What is this plot is? Nifty is यहाँ पे, ये उसका lagging information है. If a particular stock is यहाँ पे, when you are at this particular point of अभी हम इस point पे है, right? इस point पे we see Nifty at this particular point, right? I don't see any candles above this particular thing, this plot. We only look at this plot right now, this color plot.
there is no candles above this, so there is a open area for it to flow, meaning there is no obstacle for it, right? Then if you see यहाँ पे जब when it is going below this, इसके नीचे आ गया, इसके नीचे कभी आया होगा जब ये यहाँ पे सेल में आया ना सर, ये यहाँ पे ये दिस कैंडल, तो ये इसका हिस्टोरिकल ये यहाँ आया होगा, तो इसके नीचे जब ये आया तो इसके नीचे देयर इज नो कैंडल, इस ये वाले प्लॉट के नीचे देयर इज नथिंग, राइट? ये फ्री स्पेस है, सो द रिवर कैन गो डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर में तो ये कैंडल है, फिर यहाँ से इसके ऊपर ये कैंडल है, यहाँ इसके ऊपर ये कैंडल है, यहाँ इसके ऊपर ये कैंडल, यहाँ इसके ऊपर ये कैंडल है, देन फाइनली ये यहाँ से निकल गया, जब भी यहाँ से निकल गया तभी प्राइस ये यहाँ पे था, उसके बाद कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। Are you getting this? It's like a In a manner visualization of point. speaking. It's a visualization thing. So it's a probability of next step happening, probability of occurrence hai, in a manner of speaking. Exactly. So what we will like to have is no hurdles in front of us. So जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे if there is no candle below this, यहाँ पे तो my bearish sentiment would be bigger, larger. I mean, view would be stronger. So probability of bear is higher, and if it like currently the situation is green and there are no candles above, so the probability of it going higher is higher. Higher so the probability is higher. At this point, not at this point. अभी तो इस point पे अभी ठीक है, लेकिन मंडे को तो गैप अप ओपन होने वाला है SGX निफ्टी को देख के, but at this point it has given this performance already, but if it is breaking the channel, ये चैनल पे जाएगा तो ये पहले तो इसमें आके फंसेगा, इनमें फंसेगा, राइट? बट वो इनमें फंस के जब इसके नीचे जाएगा, राइट? मैं थोड़ा ड्राइंग करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना टेक्निकलिटी हो जाएगा इसमें, तो इसलिए कहाँ गया? नहीं, but I get the concept. You got the concept, right? हाँ, I get the gist of it and I get the concept of it. हाँ, एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। ये जब इसके नीचे आ जाएगा ना, यहाँ ये इस लेवल इन कैंडल्स के नीचे, देयर इज अ स्पेस फॉर द रिवर टू फ्लो। अभी आप मेरे को बेवकूफ समझोगे, क्या रिवर गंगा और ये सब बोल रहे हैं, बट दैट्स द थिंग। उसके नीचे में उसको ब्लॉकेज नहीं मिलेगा, वंस इट क्रॉसेस दैट एरिया उसकी और एग्जैक्टली दैट्स द प्राइस काइंड ऑफ अ थिंग। So मैं concept समझ गया. So however you want to name it, I got the concept of it. So good one. Okay, yeah. So I call this as Ganga and this as Yamuna. So कुछ भी नाम रख दो सर, फर्क नहीं पड़ता। That's the concept समझ में आना चाहिए कि you don't want any obstacles or hurdles and you want a free flowing trade. हाँ, नहीं तो स्टैडल एंड स्टैंगल बनाएंगे, नहीं तो समझ आ जाएगा कि अब बहुत दिन साइडवेज होने वाला है। Yes, exactly. Perfect. So that's the whole thing about it. On Ganga, I don't think any slide is left. Once last slide is putting it all together with risk reward ratio. You have channels, you have Ganga, you have risk reward ratio, and then you will always try to get entries in a very favorable risk reward ratio. Okay, and then continue to hold and trade. So that's about it. So if you have any question, you can ask me. So one last thing, okay, I kind of missed the first half of this session due to some personal reasons. Would you by chance be uploading this on YouTube or somewhere else? Yeah, I've tried to record it. देखता हूँ रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो वॉइस ऑडियो नहीं जाता है। So this thing is on. जैसा भी अपलोड कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा यार। Yeah. I'll just see after this. I'll stop recording and see if I got the recording or not. Sure. Thanks. So that's because of the timing misunderstanding. We joined late now, so we have missed it. It's okay. Who is this? Thank you, Mohit. Okay. Gulzario. Okay. Yeah, there were some last minute changes. Because I prepared myself for 5 p.m.
Actually वो मैम सिंगापुर में, तो I thought कि ठीक है, we should oblige No to. worries, no Yeah. worries, no worries. If you could get that recorded in the group also or on YouTube, it will be helpful for us. Yeah, sure, definitely. Thank you. So I think we are almost finished. So thank you everyone for joining. And again, not any CB listed analyst. It's just Thank you, sir. my Thank crazy you. way of doing things. I'm just sharing whatever I do in good spirit. Okay. Thank you, sir. Okay. Yeah. Thank you, MK. Thank you. Thank you, okay. Thank you, Mohiji. Thank you. Thank Thank you. you, MK. Thank you, Mohiji. Thank you very much.